Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I welcome all of you in this PMP introductory session. This is going to be the schedule of our full course, inshallah, that is starting from 1st of December. It will be Thursday, Friday, and Saturday. The timings I have mentioned here. This is going to be the Pakistani time, and this is going to be the Saudi time. First of all, my introduction. My name is Abu Bakar, and I have done bachelor's in computer science, master's in information technology. I have done some certifications related to project management and quality management. 3 certifications from PMI. If we say PMI, what is PMI? Project Management Institute, which is the governing body of the certification related to project management. So PMP, for which I will give you introduction today, inshallah. And RMP I have done, that is risk management. After PMP, you can do specialization in different areas. So one area is risk management, and one area is agile related methodology. So that is called as ACP, Agile Certified Practitioner. Then I have done 2 levels of Six Sigma, Green Belt and Black Belt. To be precise, it's Lean Six Sigma, Green Belt and Black Belt. It is related to quality management, or you can say business processes improvement or perfection. So these things come under or related to Six Sigma. I have more than 22 years of working experience with more than 200 PMP workshops I have already conducted in KSA, mostly in KSA. Now I have recently shifted to Pakistan with more than 12,000 engineers and managers just like you. This is my contact email and contact number. Some of my recent sessions, including physical and Zoom sessions. This is Nokia Saudi Arabia, one of my biggest client in Saudi Arabia. This is my open course that was in Riyadh. This was in Yambo, National Petroleum Yambo, NatPat. This is KFUPM, King Fahad University of Petroleum and Mineral Sciences, one of the top universities in the world. And always I had a dream to study in this university. Somehow I could not study there, but Alhamdulillah, I was able to teach there. So that itself was an achievement. Someone sent a message on the chat that can't hear voice, so please make sure your sound system is connected, right? So Huawei or your sound system is not connected, so that's why you cannot hear me. So of course I'm just telling you, still you will not be hear me. So maybe someone can type in the chat box, so maybe he will read it. So that is STC. So the telecom. These are some of my recent on Zoom sessions I conducted. This is PMI fact file. Fact file means stats, that how many people have done which certifications so far. Yeah, thanks, Arun. Just type a message for in the chat for the person who has named himself as Huawei Y9 Prime, so that he can connect his sound system and then he will be able to hear. So PMP certifications globally, that is accurate up till January 2022. So more than 1.2 million people globally have done PMP already. And then there are some other certifications also, CAPM. So just in case some of you who do not have enough experience, I will explain in the coming slides that how much experience you need in order to apply for the PMP exam. And but still, if you are not experienced enough, you need minimum 3 years experience. If you are a fresh graduate or less than 3 years, then maybe you can
think about CAPM, which is a junior version of PMP certification. Then you have Agile Certified Practitioner, around 48,000 people. Then Risk Management, roughly 10,000 people. Then Business Analyst, PBA, around 5,000. Then PGMP, Program Management Professional, around 3,500. SP Scheduling Professional, around 2,600. Then you have Disciplined Agile, you have 1,500, and Portfolio Management around 1,100. So this is just the number or count of people who have done PMP certifications all over the world. Okay, now this slide is about prerequisites of PMP, that how you can become a PMP certified professional. So there are two prerequisites. Number one is your experience requirement. That is number one requirement. Number two requirement is attending a training. So just in the beginning, I mentioned that our training is starting from 1st of December. So that will fulfill your criteria of 35 PDUs. PDU stands for Professional Development Unit, or contact hours. So roughly 35 hours duration of training you need to attend. That is a mandatory requirement. So our course, or if you do it from anyone else in the industry, any other training institute, still it will fulfill your criteria. Right. So this is one requirement, training, and second requirement is experience requirement. So number one, if you are a graduate with 4 years degree, that is also called as 16 years education. So if you are a graduate with 4 years degree, in that case, your experience requirement is 3 years. In case you are not a graduate with 16 years degree or 4 years degree, in that case, your experience requirement becomes 5 years. So in case you're a diploma holder, inter, matric, whatever. So if you have 5 years of experience, you can apply for PMP exam. Or if you have 4 years degree, means total 16 years education, then you need to have 3 years experience. So on these two requirements, if anyone has any question, please feel free to ask me. You can unmute yourself, you can ask questions. I will try to answer all the questions, and then we will go to the next topic. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yeah, walaikum assalam. Yes, Shakil, Yeah. we can hear you. Yeah. I have just a question. Does training have some time limitation? Like if I have done that training maybe 10 years ago, is it valid now? Or It is still valid from so there is no the time limit There is no for time limit. There is no expiry of that. But most likely you will not remember anything after 10 years, or if you have taken any training many years ago, you yeah. must have forgotten everything. So for the sake of knowledge refresher, it Okay. is recommended to take the training again. But for the sake of applying for this exam, there is no restriction. Okay. Perhaps it may have, if it is less than maybe 25 PDUs, then I require the remaining PDUs. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Yes, please. Any other question from anyone? Please feel free to ask. Assalamu alaikum. Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, the same case is for me. I did MBA, I think 11 years ago. Right. So I did one course of project management at that time. So I don't know that because at that time it has been called credit hours. I don't know that what is the meaning of contract hours. So this credit hours and contract hours are the same, or is it? No. It's not same. It's easier than credit hours. So, for example, you how much was your credit hour course? I believe 36. 36 or 3? I'm not sure, but Usually you have I courses have in a taken semester. 15 classes of 3 hours. 3 hours, right? Yeah.
So that is usually called as 3 credit hours. 3 credit hours means per Right. session or total? Usually per week. Per week. Okay, yeah, per week, one class, and Right. they taught us for So 15 right. classes. Right. So 3 credit hours course, and usually Uh, your semester is 15 weeks. exactly. Right. So yes, it becomes 45 PDUs. So that is good enough to fulfill this criteria. But as I mentioned to your other friend, that Mhm. in those courses, you might have studied PMBOK methodology, but most likely no. Right. Hmm. So Because if it was you, so general, yeah. and So at that maybe time for the we sake of application, it is acceptable. okay, But still you will struggle in covering the book itself. definitely. Right. So that's why it is recommended to take the training. But if you want to take a chance, yes, for sure your certificate is acceptable for the sake of application. There is no issue in that. No, I understand that training is Yeah. definitely a must requirement. That's why we are here. Yeah, Okay. requirement wise, it fulfills your requirement. Your old course Hmm. in Hmm. MBA related to project Hmm. management fulfills that requirement. Hmm. But when you will start reading the book for the exam, you will face problem. You're right. From that perspective, it is recommended to take the training. Okay, any other Okay. question from any? Yeah, you're welcome, please. Any other question? You can ask question in English, Urdu, Punjabi, whatever you like. I will try to answer in English, but you are allowed to ask question in any language out of these 3 only. About experience requirement, is it okay to everyone? Assalamualaikum. Welcome, salam, rahmatullah. Yes, I have bachelor degree, BTech pass degree, 2 years after diploma. How Right. much experience required for me? If it is 2 years degree, it is considered under diploma category. You need 5 years experience. Okay. Yeah, welcome. Any other question from anyone else? Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam, rahmatullah barak. Sir, this is Shanwaz. So Right. I want to know about the exam. Should we go for online or we have to appear in the center for this a specific center? You have to appear in? both options. You have both options, but I recommend go to the exam center. That is more comfortable experience, more reliable. So it is always recommended to go in the exam center and give that exam. There are tough experiences, bad experiences in the in giving the exam from your own facilities. So in every big city, you will find an exam center. What generally the problems if we are taking it from home or our own facility? Many people, they gave feedback like this, internet issues, number 1 problem. Number 2, sometimes the software restarts. Number 3, the biggest issue is the invigilator, right? Because you have to arrange a sound system, camera, someone will continuously monitor you, right? Right. So people had problems in dealing with those invigilators. For example, one bad experience recently, one person shared that he was attempting the exam, and sometimes people habitually, whenever they start reading the question, they start reading in a little loud voice or with voice. So he did the same thing. The invigilator, he stopped him. He gave him a warning. He said, don't do this. Because they also have SOPs. Who knows that there is some hidden device around you and someone from a distance is hearing you maybe, and he can help you, unfair help. So that's why he gave him a warning. Next time, Oh, and after some few minutes, he again started reading the question, but this time only with the lips movement without any voice. That person cancelled his exam, oh, right?
So there are problems like this, multiple incidents like this. So it's always recommended. For example, if I gave one exam this year of ACP in Lahore. If you are from Lahore or any other city, in Lahore, the exam center is in FC College. Beautiful center, very comfortable, very nice experience. So you can go to any exam center in every big city. You will find a comfortable exam center. Go there, give your exam, so that no other tension. Okay, here I have two questions. One, if we choose this PMI authorized centers, do we need to pay extra for that to take No, exam from there? no. That is Nothing. included in the exam fee. After paying Okay. the exam fee, you can choose the exam anywhere in the world where you have Pearson VUE exams. Okay. Second thing, in the centers, we have to do the same thing on the system, means computers, or it will be paper based. Same computer. Okay. Okay. Computer based. Yeah. So exam questions will not change. Exam format will not change. Everything will remain same. Thank you. Thank you. You're welcome. Yes, please. Anyone else? Any other question that comes to your mind, please? Yes, sir. Is there any specific date for the appearing in exam, or you can go anytime for the examination? Like, Go anytime, but with prior booking. Like a doctor appointment, that I'm available on this date and this time. Okay, you book your appointment on first come first serve basis. So that is how you book the exam. There is no defined date. So you have like every week available, exams are every day available, right? And every day multiple slots are available. In case you decide to give the exam from your home, you have the luxury to choose the date and time, even on the weekends also, even in the midnight also. So 247, it is available if you decide to give the exam from home, but from the exam centers, only the business hours and business timings only. Any other question from anyone, please? खुल के पूछें क्वेश्चन, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है. Whatever you want to ask, please feel free to ask. sir, there is some specific institute they are providing the services for this PMP, or there is any agent can provide the services. Like there is some institute here where you can go and you can appear in the exam. So same like as you can say TWI, some agents are working and they are making some their offices like. So is there any same procedure here for PMI, or there is a different? As I told you, Pearson VUE, they are authorized to take the exams. Okay. Right. So after your application, I will explain that on the coming slides, the application process itself. After your application process is complete and you have done the payment of the exam, after that, you can search anywhere in the world where are the centers, and you can choose any city, any center available, right? So Pearson VUE, these are the authorized agents or servers, whatever you like to call them as. Actually, the Pearson, if we have already account with the Pearson, so we can book our appointment? No, not through Pearson. You have to book your appointment through PMI. Okay. Right? Because we some test you already. it doesn't make any difference. You have to go to the website of PMI. Through that website only you can book the exam. Okay. Any other So question? the Yes, please. experience is mandatory with the degree, or just you can do? That I already mentioned, it is mandatory requirement to have a minimum 3 years of working experience in case you have 16-year education, and 5 years in case you have less than 16 year. And if you have less than that, you have only two options. One option, write fake experience, with which of course I will not recommend or suggest at all. So number two option, go to CAPM.
So CAPM, as I mentioned before, that is the junior version of the certification of PMP. So if you have experience, you can go to PMP. If you do not have experience, still you can take the same training, same subject, same book, easier exam than PMP. That is called as CAPM, Certified Associate in Project Management. Still you can find good opportunities like in project as a project coordinator or PMO departments. So CAPM still is good enough, but CAPM will not automatically convert into PMP once your experience is complete. After your experience is complete, then you have to give the exam or shall give the exam to get the PMP title. Any question or And the confusion? second thing, sir, will they check our experience like with the certificate, our degree, like our degree is completed in 2020, like that, for example. So minimum experience as per our recommendation is 3 years. So we have only 2 years experience. So what's about 1 year? Calibri font याद है? Yeah. बस समझ गए होंगे आप. No, I'm saying वो check करते हैं फिर उसमें जाके verify करते हैं इस तरह से कुछ. I will come to that point. There is a slide on that that is called as audit process, right? I will explain that on the next slide. Any other question or confusion, please? Oh. Okay, for example, Aziz, I will come to that point. Your question. Okay. So, for example, if someone has 30 years of experience, or I just saw one of my friend in the participants who has same as experience as I have. So let's say 22 years of experience. So let's say that person is filling the application of PMP, right? So now I'm going to tell you the experience or the application filling process. What you need to do, you have to go on this website. Which website? www.pmi.org, right? And what is PMI? Can anyone tell? Very easy question. What is PMI? It's Project Management Institute. Project Management Institute. So Yes. in Project Management Institute is the governing body of this certification, right? Unlike some other certifications, you will find multiple bodies offering you the same certification. For example, Six Sigma, ISO. So you will have multiple governing bodies who decide their own fee, decide their own exam contents, exam format, exam passing criteria, and they give you the same title. But PMP in the world, only one body is giving that. There is no other body giving the exam. So that's why the exam format, exam content, exam book, exam questions, exam fee, everything is globally same. Regardless, you give the exam here or there. Exception is the text. Exam fee is same. But text-wise, if someone is giving exam from Saudi Arabia, right? So, or applying for the exam from Saudi Arabia, you will have to pay 15% VAT, right? Tax on the application, right? Someone is requesting to give the permission to record. I will share the recording with you, right? So don't worry. And I will share, upload it on YouTube, and I will share the link with you. So only the text is different. So if you give the exam, apply for the exam from Saudi Arabia, you will have to pay a certain fee plus 15% tax. But if you apply from Pakistan, there is no tax on that. So you will have to pay that fee only. Fee is same, but tax policy country to country could be different. So I was telling you that, let's say my friend is applying for the exam and he is having 22 years of experience and he's a graduate. So how many years of experience he must enter in the application? What do you think? He has total 22 years and he's a graduate with 16 years education. So how many years of experience he should enter in the application? What do you think? 3 years. Yes, you are right, 3 years. So I took that example intentionally just to make sure all of you understand that you do not need to upload or enter all the 100% experience.
only the required one. Only the required one. So a person who is having 22 years of experience, so let's say he started working in 2000. So since 2000 up till this point, you can take any 3 years, but with a condition. This is important to understand. Only within last 8 years. Only within last 8 years. So if you enter experience from, let's say, 2006 to 2009, that will not be accepted. If you enter from 2011 to 12, it will not be accepted. Only in the last 8 years backwards from the point of submission of the application. Is this point clear to all of you? Any question or confusion on that, please? Now, within last 8 years, any 3 years of your choice, it could be continuous, it could be with gaps, it could be multiple companies, it could be single company, multiple projects, single project, same country, multiple countries. Any experience of your choice you can enter. So for example, that someone enters experience from, let's say you are going to upload your application or apply for the exam in 2022 December after taking the training. So which window of your job experience you can consider? December 2014 up till 2022 December. Within these 8 years, you can choose any 3 years. Let's say you choose 1 year from 2016 to 2017. You select another project from 2020 to 2021. So it's up to you. 12 months from here, 24 months from here. So total you have to select or enter or upload projects of 36 months in your application. Any question or confusion, please feel free to ask. Yes, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही उसमें जैसे प्लानिंग है उसमें ही हो सकता है, एग्जीक्यूशन है, या मिक्स होना चाहिए? ये किसी एक एरिया में भी हो सकता है? नहीं मिक्स होना चाहिए। पहले होता था पुरानी एप्लीकेशन स्टाइल में कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ता था इन 5 प्रोसेस ग्रुप्स: इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग. But now recently means like 2 years ago, they changed the application entry interface. So now you are not required to segregate your experience in these 5 process groups. So you can just enter general experience. So, but the previous policy was that you had to mention experience in all 5 process groups, which are called as initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing. Any other question from anyone, please? Sir, I have a question. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं अब मेरी एक है बैचलर डिग्री और मैं एक इंजीनियरिंग फर्म में काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स हम डील कर रहे हैं। तकरीबन कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, उनको डिप्लॉय करके जो है वो हमने एग्जीक्यूट करके मॉनिटर करना होता है। तो क्या मैं एप्लीकेबल हूँगा पीएमआई के लिए, या मुझे कोई अलग ट्रेनिंग नहीं, आपके प्रोजेक्ट्स ही काउंट होंगे। ये एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना। ट्रेनिंग तो अलग रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस अलग रिक्वायरमेंट है। दोनों रिक्वायरमेंट जरूरी हैं। ठीक है, ट्रेनिंग अलग होगी? ट्रेनिंग तो लाजमी है। ठीक है, ट्रेनिंग के बगैर अलाउड है जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम? यस प्लीज। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व Yes, बरकातहू। this is Fayaz here. वेलकम। So actually, I did my master's in pharmacy and I have like 12 years of experience. So I want to know how this PMP is going to relate it to my field. It is going to help to me in the future. I suggest it's too early to ask. Maybe keep watching this lecture, and I will cover the course contents also.
So after understanding the course contents, maybe you are in the best position to tell or answer the same question, that is it useful for you or not, right? Okay, okay. Thank you. You're welcome. Yes, Mujtaba, you want to ask something? Yes, sir. Assalamu alaikum. Welcome. Sir, Salam warahmatullahi. I have done MSPM recently. Graduated from Bahria University with Masters in Project Management. Will it be counted in my training? Masters. Yeah, same question another person asked also. So yes, it will be counted, but same problem or same reason, that yes, for the sake of exam, it is acceptable. But you will find it difficult. I'm not sure. Maybe you can try it. But when you will read the book of PMP, maybe you will not find it easy to understand. So for that reason, still I feel training is required. But for the sake of this requirement of training from the exam perspective, yes, that is acceptable. Your MSPM is acceptable to fulfill this requirement. Thank you so much, sir. Sir, our Welcome. university have taught this MSPM degree with PMBOK, basically PMBOK 6th edition. Right. Also, they have given introduction with PMBOK 7. So Then maybe it will become easier for you. okay, thank you. Right? You're welcome. Yes, please. Anyone else wants to ask any question? So this training requirement and experience requirement, I hope that is clear to everyone. After these two requirements, when you submit your application and it is approved after paying the fee, you can schedule the exam, and this is the exam format. So exam format, it's very easy, simple, 230 minutes and 180 questions. Objective type questions, no subjective question, no paragraphs to be written, right? So 230 minutes, almost 4 hours, and 180 questions, including multiple choice questions, fill in the blanks or matching definitions. So majority of the questions, maybe you can say 80 or 80 to 85% of the questions are multiple choice questions. 10 to 15% questions could be matching definitions also. Matching definitions means you show the things on the left side and right side, you have to drag that which matches to others. So this is the exam style or exam format. Any question on this particular point, please? Yes, Javed Ahmed, you want to ask something? Or anyone else, please? Any question on this slide before I go to the next slide? At one point here, because here people are from different cities and different countries, so everywhere the prayer timings are different. So in case in your area, it is prayer time of Maghrib or Isha. So please feel free to go quietly and offer the prayer and come back and join again. In case you miss something, no problem. I will share the recording also with you, inshallah, on the same group. Yes, please. Any questions so far? Yes, please, Kashif. Yes, I have one question Yes, on please. exam format. It says 230 minutes. So this 230 minutes is the continuous exam process, or there will be some breaks? When you are giving the exam from home, there is 10 minutes break. 10 minutes break. Otherwise, it's continuous. Or if you're giving the exam from exam center, you are allowed to take a break, but that break is actually not a break. The reason is that time will keep on running. So it's up to you. बेशक सारा time आप बाहर फिरते रहें, ठीक है, 230 मिनट के 230 मिनट, ठीक है. So it's up to you. So your time will keep on counting. Okay. Yes, brother, it's Murad. Yes. I have one question. Is there a negative marking in this or no? No, there is no negative mark. What is the passing marks? Is there any criteria, percentage, or like this 180 question out of Roughly, approximately, or rough idea only. There is no clear wording from PMI on that. You can say around 65%. That is a safe estimate. 65% is the passing criteria. But that is not So- official number.
So the weightage of each question remains the same for the 180 questions? Again, there is no wording on that officially. So just to keep the thing simple, assume it has same weightage. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जैसे आपने बोला कि जो है ना वेटेज, ये जो क्वेश्चंस होंगे इन सब की वेटेज सेम होगी या डिफरेंट होगी? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि 65%, तो कोई कोई क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होगी या सबकी सेम होगी? यार वेटेज अगर हो भी ज्यादा या कम तो वो बताते नहीं है। देखें आपके एग्जाम में आमतौर पे लिखा होता है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो 5 मार्क्स का होता है उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा यू गिव मोर फोकस ऑन दैट, बट हियर देयर इज नो सच इंडिकेशन। सो फॉर यू डोंट कॉम्प्लिकेट इट, जस्ट एज्यूम एवरी क्वेश्चन हैज सेम वेटेज। Okay, thank you. Even if they have decided any weightage, that is hidden to you, that is only known to them, it's not shared with the No, sometimes candidates. जो सर वो कुछ जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पे वो चेक करते हैं ना आपका वो लेवल, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कम वेटेज इस तरह होता है ना दूसरे अच्छा। जी जी, तो तो ये ये ऐसा कुछ बताते नहीं है। अब अंदर खाते क्या करते हैं, टॉस करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। वो बताते नहीं है, कहते हैं हमारी मर्जी है, हम जिसको मर्जी पास कर दें, जिसको मर्जी फेल कर दें, वो फैसला महफूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर आखिर में ऐसे सुना देते मतलब हैं। हम उसको रिव्यू रिव्यू भी नहीं ले सकते सर? नहीं, ओके, थैंक यू। ये वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, एक वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। आपसे पूछना है कि ये जो 180 क्वेश्चन है, ये जितने भी स्टूडेंट वहां पे बैठे होते हैं सबको एक ही क्वेश्चन होता है या हर एक के पास थोड़ा सा चेंज कर देते हैं? अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के जवाब में एक क्वेश्चन पूछूं, फर्ज करें सारों को एक ही आते हैं, क्या कर लेंगे आप? हाथ वाले का देख के तो नहीं ना आंसर कर देंगे, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है उससे, सेम आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, इट एक्चुअली रैंडमली सेलेक्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम द प्री डिफाइंड क्वेश्चंस पूल, right? So by chance some questions could be overlapping in your exam also, another person's exam also, so that is possible. Or you can say there are, let's say, 1500 questions in the exam right now, so that will randomly select 180 questions, will show to you also, show to another person also. So by chance some questions could be overlapping, right? But it doesn't make any difference, everyone is getting same question or different question. But yes, if one of your friend has recently given the exam and he tells you something about the exam, that will be definitely very useful for you. Yes, please. Any other question or any confusion, please? Sir, I have a question regarding point 2. You mentioned 35 PDUs or 35 contract hour of project management training. So it means we can get any one of it or must need to get both? It's same thing. It is called as 35 contact hours also. It is also called as 35 PDUs. कोई प्यार से उसको PDU कह देता है, कोई प्यार से उसको contact hour कह देता है. It's same thing. Yes, Okay. Javed, please. This is Shabin. Yes, Shabin. I'm actually one of your students. Welcome. From name Shabin, I remember. Yes, please. Yes, please. Yeah, sorry. Unfortunately, I couldn't complete because I joined in a classes long back, maybe 1 year before or something, and unfortunately, I couldn't complete it. No I've got a problem. couple of questions, Yes. point to point. First thing is that I've already joined your courses, and I think it is still working. So, in order to obtain this 35 videos of this certificate, do I need to just complete watching all those videos, and is that enough? Yeah. That is enough. Okay. So you can just send me a message on WhatsApp whenever you complete. I will issue and share your certificate with you. All right. Second thing, Yeah. which are the latest edition of books that we need to follow? Like that, it's better because we are not going in that discussion today, right? But as you have asked, so I will just give you a quick answer. Rita 10. You can contact me on WhatsApp for further detail. excellent. And for the writing exams, recently during COVID, they started this online option.
Is it Yeah. still workable like That is still when the available. exam is That over? is still available, but maybe you joined late. I have mentioned already. Exam center, that is more convenient experience as compared to giving from home. So if you are in any big city, try to find the exam center near you, inshallah. But in case All right. some And people, they do not have any exam center in nearby area, in let's say next a radius of 100 kilometers or 300 kilometers, maybe then you can go for home-based exam. and one last question. This is not related to PMP, but just I recently heard about one of the program called ACP, which is like an advanced version of something for this like this for project professionals. Have you got any idea regarding this? That I have explained in that lectures also, or that is as a certification, Agile certified practitioner. Yes. That is mostly suitable or applicable on software developers. So if you are from software development background, then yes, I recommend you to go for ACP. Otherwise, if you are from civil, mechanical, electrical background, then I do not recommend you to do ACP. Okay. All right. Thank you. You're welcome. Any other question or confusion on this slide before I go to the next slide? Anyone? Okay. Now someone asked this question that will they check the experience? So that is what I'm going to explain now. That this process is called as audit process. So remember, when you are applying for the exam in the first round, when you enter your details in at this stage, you do not need to upload any document. No upload at this stage. But after you submit your application, 10% of the applications are selected randomly for the audit process. If your application comes in 90%, that means no further question asked. Whatever you typed in your application, that I worked in this company, I have done graduation from this university, I have taken training from this person, this institute, and from this date to this date, everything is accepted as it is. But in case your application comes in the 10% random check, that case you will have to upload or share the educational certificates, means copy of your degree or transcript, your experience letters of those selected 3 or 5 years that you have mentioned in your application. Once again, if you have 22 years of experience, you don't need to provide experience letters of all the 22 years. No, only those 3 or 5 years, those companies or projects which you have mentioned in your application. Number 3, signatures from your colleagues or supervisors on the same projects in the same organizations. And number 4, training certificate copies. So these are the 4 things required in case your application comes in 10% audit process. Any question or confusion on that? So that decision is taken at the same time. Whenever you submit the application, immediately it is selected for audit or 90% no audit. That decision is taken on the spot. And if it comes in 10%, you will receive an email from PMI that we have selected you. Please fulfill this criteria. They will give you a checklist, and accordingly you have to comply with that. In case you come in 90%, then they take 5 days, business days to review your application, and then they send you a response that is it okay or not. If this is not okay, then you have to modify and submit again. On the chat, someone asked this question that he submitted application 5 years ago or started working on that. So remember, the application is only for 3 months. Drafting the application. So if you start that process now, within 3 months, you have to complete that process. Otherwise, your application is wasted.
right? So in case I'm talking about before submission of the application, before approval of the application. So in the draft stage, your application can remain only for 90 days. Within 90 days, you have to complete and submit. If you do not complete and submit, then it is wasted. After that, you have to start from zero. But yes, you can copy paste the information from the previous application and you can start again from zero. So any question or confusion so far before I go to the next topic? So exam information, I already mentioned, it is 180 questions, 230 minutes, no negative marking. Out of 180 questions, and some of you, or when you are reading, or you will find that on social media, exam is changing. So recently means it was in January 21. In January 21, they changed some things in the exam. Before January 2021, the exam was of 240 minutes and it was of 200 questions. And out of those 200 questions, 25 questions were pre-test questions. Pre-test questions means they have zero weightage. They are not scored. Regardless of your answer, right or wrong or blank, it is not considered in your final score. So before 2021, January 2021, there were 25 pre-test questions. But after January 2021, they have just reduced 10 minutes and 20 questions. And those 20 questions are pre-test questions. So that is the only difference, that before January 2021, other than some book related or the content or the focus of the exam. For example, before January 2021, there were so many calculations coming, but now calculations are not coming. Agile related questions are coming now. So this is the... Assalamualaikum. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir, I wanted to ask you for filling up this PMP exam application, this 35 PDU certificate is necessary to attach in the application? I've just explained it in detail. I think you just joined now, maybe. So maybe you can watch the recording. And then if you are not clear, you can ask me again. I've just spent maybe 10 to 15 minutes on the same topic. Right? Okay. So this is the exam information, and roughly 60 to 70% passing, or 60 to 75% passing marks, right? So this is the information related to new exam. Any question or confusion so far, please? Anyone wants to ask any question? This is how exam software looks like, right? So remember, all the questions will come one by one in front of you. These are two screens, screen A and screen B. So this is your main screen, screen A. All your questions will come in front of you one by one. When you click on that, it will show you the question statement. It will show you the options. If you want to answer it, select the options and then click on next button. So when you click on next button, then the next question will come. That means it is in your control that how much time you want to spend on each question. You want to spend 5 seconds, you want to spend 5 minutes. It's purely your choice. In case you want to go back, you can do that also. Right? So you can go next, you can go back also.
And remember, the questions remain editable. For example, you were on question number 22, you selected A option here, and after that, when you go to question number 23, from the statement itself and the options given, sometimes your brain starts working and you feel, oh, I have not selected right answer on the previous question. I think I should revisit. So you can go to previous, you can change it from A to B or anything you like. So that means your questions remain editable within these duration of 230 minutes. So one by one, you go to the last question, and here your remaining time will keep on showing here. Calculator will be there. As I told you, the feedback from the people who have given exams in the after January 2021, they said zero calculations are coming. Zero calculations related to questions related to calculations are coming, but still by mistake, or maybe you'd never know. In case you need calculator, you click on this button, it will open and you can use the calculation. You can do the calculation and select your answer. Any question or confusion so far, please? आप लोग सुन भी रहे हैं कि बस ज्वाइन करके भाग गए इधर उधर कोई हूँ हाँ ही कर दें यार listening we are listening okay. we are listening Okay. yes, we are listening. Okay, thank you very much. Okay, so this is how you have this first screen, and there is a button here, flag for review. So flag for review is in case sometimes it happens, some difficult question comes and you are not confident about the answer. So you say, okay, if I get a chance, I will revisit this question later on. So that is a feature available, flag for review. So you can click on this question or this button, it will flag it. And later on, whenever you click on this button, review screen. So this is your screen B, review screen. So if you click on this button, it will show you all the question numbers only, without statement or without options. Walaikum assalam rahmatullah. So without questions or without options, it will show you the numbers only. And you can see here that if some question is incomplete, you can directly click on that question number. It will open and you can answer it. Or if some question is flagged, you can directly click on that question and it will open that question and you can answer that or modify the answer. And whenever you feel that I have completed the exam, you can click on this button, end review. So if you click on end review, now your exam is submitted. And there are two ways to finish your exam. Number one, let's say you finish before time, then you need to click this button. Number two, you are still working on your exam and 230 minutes finished. It will be automatically submitted. Any question or confusion, please? Assalamu alaikum. Yes, please. Welcome. Salam Sir, warahmatullahi. Below this screen B, we are having review all, review incomplete, review flagged. Yeah. Maybe this one I little bit missed it. Okay, one option is you can directly click on a question number. For example, I say question number 11. So I can click on question number 11, it will open. It will open on screen A. Or if I click on review incomplete, so only those questions will start coming by clicking on next and next and next button, which are incomplete or flagged only. So that is the only difference. Right? Okay. Thank you, sir. You're welcome. Aziz Khatabi, you are asking that what certificate, what will this certificate give us? Explain PMP and CAPM. So PMP and CAPM, there is only one difference. If you have more than 3 years of experience, you qualify for PMP exam, but still if you want to give CAPM, you are allowed to give.
So sometimes some people who are not feeling confident enough, instead of giving PMP first, they first give the CAPM, although they have qualification completed. So if you do not have 3 years and you want to still learn this knowledge subject and have a grip on that, then you go for CAPM. So PMP is the main popular certification. CAPM is a baby version of that. So that is the difference between these two. What this certificate will give us, this certificate, now I'm assuming you are talking about my certificate that I will give you after completing this training. So after completing this training, the my certificate is the requirement. You need to enter that information in your application. So that is a prerequisite. If you remember, I showed you here this prerequisite training requirement. So my certificate is this one. Training certificate. That is from my side, or from any other institute that you attend training of PMP from, they will issue a certificate. So that will fulfill this requirement. After you finish your exam and you pass your exam, inshallah, then you will get PMP certificate. That certificate will be from PMI USA. So I hope this point is clear to Khatabi, you also, and everyone else. Any question or confusion from anyone, please? Sir, now this certificate, what you said, the training certificate is a 35 PDU certificate? Yes. Okay, thank you, sir. You're welcome. You're welcome, Aziz. Now you can apply for the exam by taking the membership also. And the membership is approximately 149, but they have just recently changed it. So maybe it has come down to something like 110 maybe, or something like that. So they have recently reduced the membership fee and the exam fee. Almost, you can say $150 difference. So they have recently reduced this from the exam fee and membership. So exam and membership, earlier it was costing you around 550 plus tax. And if you are applying from Pakistan, there is zero tax. But here one thing I want to give you a tip here. If you are a Pakistani and living in Saudi Arabia, and if you give your postal address of Saudi Arabia, you will have to pay tax 15%. But if you are a Pakistani and living in Saudi Arabia, although you want to give exam in Saudi Arabia, doesn't matter. But if you give your home address of Pakistan, where you will receive the certificate, you will pay 0% tax. So it's a big difference if you're paying from your pocket. Otherwise, if it is going to be paid from by your company, doesn't matter. Maafi mushkil then. So that is the difference. So earlier it was 550 plus tax, but now they have just reduced it to something like 400 plus tax, including membership. This 550 was also including membership. I will explain that on the next slide about the pricing. So membership is good to get. It gives you some discount also. You get access to their library also, which gives you their recent standards and publications. It is good for networking opportunities also, because PMI chapters in each city. For example, in Lahore, and on Saturday there is a event here. There is an event here, so that is also giving discount if you are PMI member. So similarly, in every big city you have chapters. It gives you a chance to do networking, make good connections in the industry. Plus, one thing that may tempt all of you to see how much difference it makes in your average annual income. So PMI conducted salary surveys are available, which are very detailed, country by country, like all the countries, 100 plus countries, you can say. You can see where difference. For example, you want to see a planning engineer,
with 5 to 10 years of experience, with PMP and without PMP, in Dubai, in Qatar, in Saudi Arabia, in Bahrain, what is the difference? Right? In Europe, in Germany, in Australia, in Canada, and USA. So every country's data is available. So that is also a good document available for you. So these are some benefits associated with membership. The cost of the exam that I just mentioned to you, that they have recently reduced it. So the net cost earlier was 405 if you take membership. So 150 with the member for the membership itself plus 405. So total it becomes almost same 555, or you skip membership and directly give the exam. That will also cost you the same. But recently they have just reduced it to overall $400. So there is a discount. I'm not sure it's temporary or permanent. Similarly, in case, remember with one application, you can give 1 attempt, 2 attempts, 3 attempts, but every time you have to pay. Within 1 year, you can give 3 attempts, but target most likely, inshallah, 90% chances if you do good planning, good preparation, serious attempt, inshallah, more than 90% chances you will pass in first attempt, right? So with first attempt, you have to pay this much, or the reduced price 400, and the second attempt it was 275, maybe now it might be something like $189, something like that, and third attempt is also same. Result is given immediately when you finish the exam. The result is displayed to you, pass or fail, in qualitative form. Qualitative form, only pass or fail. No numbers that you scored 70%, you scored 90%, nothing like that. Only they tell you pass or fail. They show you on the same screen. Any question or confusion up till this point, please? And after you finish the exam, when you come outside happily or sad, depending upon the result, the attendant, he will give you one more printout, right? So that printout will show you your result in written form, overall, pass or fail, that is shown. Number 2, they have distributed the percentage of the questions in 3 domains. Maybe in 15 minutes, we will take a break of 10 minutes or 15 minutes, inshallah. And before break, I will just focus on the exam format, application or PMI. And after the break, I will cover the contents, including knowledge areas and process groups and planning and baseline and things like that. So domain number 1 is process. They say 50% of the questions will be from the processes. And domain number 2, people, they say 40, they means PMI, 42% of the questions, and domain 3 is business, 8% of the questions. So this is the distribution of the questions, and they tell you your result in this way, that in domain number 1, you were on target or above target or below target. Same is for domain 2 and domain 3. So this is what you get in your written result. But remember that written result is not your certificate. That is given to everyone regardless you passed or failed. And within 1 week, you receive the soft copy of your certificate if you pass, inshallah. And within maybe 2, 3, 4 months, you will receive the hard copy of your certificate from PMI USA. Any question or confusion so far, please? PMP is for 3 years, but the good thing is it is renewable without exam for another 3 years if you keep on collecting more PDUs, more trainings,
RMP, ACP, Microsoft Project, Primavera, paid, free, doesn't matter. So there's no distribution in next 3 years. If you keep on collecting 60 PDUs every 3 years, your certification will be renewed for another 3 years without exam. But in case you do not have 60 PDUs in 3 years, your certification will be suspended in the 4th year. The 4th year is the warning period. If you collect your missing PDUs in the 4th year, it will be reverted back to normal state. But in case it still after 4th year, it's still not complete, then you can say it is cancelled forever, unless and until in future you appear in the exam again. So this is how you can keep on continuing. I gave my exam in 2005. So since 2005, I am continuing after every 3 years my PMP certification without exam. Some sample questions before the break, just to give you an idea what type of questions they can ask. So in the exam, sometimes they present you in this way that they give you, show you 4 options, and they ask you that which option is a false option. So which of the following is not true of obtaining project plan approval? So just to give you a chance, can you read these options and suggest what do you think is the right answer? C is wrong. I think A, B, and D are right. Anyone else? Okay, someone suggested C. Okay, let's wait for some other answers also. C. Same C. Okay, can anyone tell me what is the meaning of A? Until you obtain plan approval, you don't need to put changes to it through change control. Can anyone explain me the meaning of this option? जी मैं कोशिश करता हूँ जी जी प्लीज. इसका मतलब ये है कि जब तक प्लान फाइनलाइज होके अप्रूव नहीं होता, चेंज करना आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है. यू डोंट नीड एनी अप्रूवल और यू डोंट नीड टू गो थ्रू द चेंज प्रोसेस, चेंज कंट्रोल प्रोसेस. Okay, you want to say before the plan is approved, you can make any change to it without asking or taking permission, right? This is your explanation. What about others? Do you agree with this answer or not? Or this description, explanation of this answer A? Anyone else to agree or disagree with this? What Kamars just said? Yes, I think he is right. He is right. क्या हम चेंज कर सकते हैं बगैर पूछे किसी से? Yes, because it's not approved. After approval, cannot change. Right. Yes, you are right. Exactly. So yes, Kamar, you are right. जब तक हमने baseline नहीं किया, before when we say approved means now it can be called as baselined. We have taken approval after enough discussion from the stakeholders, and now any change to it will come through change control. But before that point, yes, we can keep on changing without raising a change request because it's a draft stage. Yes, you are right. So second option, change control makes sure that only approved changes can make it into the approved plan. Yes, that is just an extension of the same concept as explained in A. Only one person needs to approve the project management plan. No. It is important for the entire team to buy into. What is meant by buy into? Part of. To agree and own. Right. Yeah, buy into means own. Own, part, involvement, participation, agreement, consensus. So if you take input from the team, if they feel, yes, we have developed this plan, chances are higher that the project will be successful as compared to if you impose the plan on the team. So this is the difference, right? So C is the right answer. Yes, it is right. It is true. Next question. We have to construct a wall in 10 days.
and 1000 Riyal is the budget. Very important concept. So please make sure all of you participate and understand this. I'm just showing you some sample question, and in those questions itself, we are discussing some important terms. So total budget is 1000 Riyal. At the end of 4 days, we have completed 20% and we have spent 300 Riyals. Assuming linear planning, 10% daily achievement and 10% daily spending, what can we report about the project? क्या status होगा project का? Behind the schedule. D. Behind the schedule. B. D. Behind schedule, overspending. Yes, overspending is clear. Behind schedule. D. It's No. Behind schedule and saving it's money. overspending. Behind schedule and saving money. For it's fourth day. And No. Actually, the answer is D. Answer is D. The answer is B. Behind schedule, saving money. Answer is D. Okay. Just give your opinion only, right? Just give your opinion. That in my opinion, answer is this. Option B, behind schedule. I think it is B, behind schedule, saving money. Okay, let's discuss. So far, there were many different answers, but no one said it is ahead of schedule, right? Sorry, this one. So at least all of you agree that it is not ahead of schedule. Now, there are different opinions. Some people are saying it is saving money. Some people are saying it is overspending, right? So let's try to understand why they are having this opinion, so we can easily understand why they are saying so. Total project duration was 10 days, right? We are standing at the end of 4th day. So that means 40% time has passed. In 40% time, how much we have completed physically? 20% of the work. So it's very easy to say we are behind schedule. Very easy. Now, how much budget in percentage we have spent? 30% budget spent. %30 budget has been spent. Now there are two ways to look at this point. 30% spent on 20% work and 30% spent in 40% time. Right? So both comparisons are there, right? Both comparisons are there. If we compare that 30% budget has been spent in 40% time has passed, it looks like saving money. But if we compare 30% budget is spent on 20% work completed, it looks like overspending. Overspending, yes. So what do you think, which one is more logical comparison? Overspending. I think D is logical, behind schedule and overspending. Yes, you are right. Overspending, that is the right comparison. So remember, we should not compare the spending against the time passed. We should always compare the spending against the accomplishment. So the right answer is D. Any question or confusion on this particular point, please? One more question, another very important concept. You are a project manager of for a railroad construction project, and remember in the exam there will be many scenario-based questions, stories-based. Your sponsor has asked you for a forecast. Which forecast? Cost forecast. Now, can anyone tell me what is the difference between cost-related plan and cost-related forecast? Yes, please. Can anyone tell? Forecast seems to be a estimation, but cost plan may be comprehensive, contains more details.
and near to accurate. Anyone else? Difference between? Yes, please. Plan is the initial baseline plan, what you have already made. Now, forecast is a reference to the actual project scenario. Now, what will be the forecast? It is a rough estimate. Yes. सर प्लान जो है आप प्रोजेक्ट से पहले बनाते हैं, जबकि फोरकास्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आप उसको चेक करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं. Where we are standing right now. Right. Yes, you are right. Yeah, it's right. I will just add, plan is totally for the future to come, but the forecast is currently something happened. When we have something in present and for major part or further in the future. But Then forecast there should be project. Yeah. Forecast is also for the future. Plan is also for the future. Yes, but forecast should be from present situation to onward. Yeah, that is another point. So yes, basically a cost plan is more like a quantitative thing, where you have done a proper calculation in your planning when you do the initial, project planning and everything. But forecasting is like where you're heading as your plan forward. Can you tell me in this scenario how much is your cost related plan and how much is your forecast? Now in this scenario, like for example, the initial one, then we have to construct a wall in 10 days and 1,000 Saudi Riyal is the budget. That is like your plan for this. Now the forecasting will be based on that we have. Tell me the numbers. Tell me the numbers only. Okay, 10 days and 1,000 Saudi Riyal is the plan, and 20% and 300 Saudi Riyal is your forecast. That's your forecast will be here. The cost forecast will be after 10 days will be 700. One by one. Yeah, one by one. Yes, Jafar, please let him finish. 30% after 10 days, the cost forecast will be Mohsen, please. There is so much noise on your side, so please keep your mic to mute mode, please. Yes, Jafar, please. Yes, Jafar, unmute your mic, please, and then tell me that. Okay, sir. The cost forecast for the duration of the project, that is 10 days. At the end of 10 days, the cost forecast will be 750 Saudi Riyals. Okay, and plan? Plan will be 20 plus 10, 50%. Okay, can anyone else tell the answer? How much is the cost plan and how much is the cost forecast in this project? Cost plan is 1,000 Riyal in 10 days. And at the end of 4 days, the forecast we will calculate like this, that 1,500 Riyal will be needed to complete the remaining 80%. And additional 6 days are required more, means 16 only days. Only cost related. We are not discussing time, right? 1,500 So 1,000, yes, your answer is right. Cost related plan is 1,000 for this project, and cost related forecast on the basis of so far encountered problems, right? Whatever we have done badly, it looks like the total project will take 1,500. Is this point clear to all of you, or any question, confusion? Jafar, is it clear? Yeah, I was having a confusion here, sir. Yeah, it's maybe now it's clear, because now it is cost plan, it is 1,000 Riyals, and the cost forecast will be reference to the baseline. Okay. Cost forecast is related to the encountered problem. ठीक, हम जो ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, बैड प्लानिंग की थी, बंदे रिश्वत खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, so all the problems that we are facing in the project, considering those, now it looks like that is just like a match score predictor, right? Yeah, got it, sir. Got it. So that is the difference between
cost related plan and cost related forecast. So now going back to that question. So now your sponsor is asking how much is the cost related forecast. And just after this question, we'll take a break, inshallah. So the project has a budget of 80,000 and the CPI, and another very important term, cost performance index. Maybe the most important KPI on a project. CPI. That is actually, meaning of that is spending efficiency. How efficiently you are spending your budget. So if we say 0.95, 0.95 is basically 95% efficiency. Not very bad, but less than 100%. That means we are slightly overspending, slightly over 5% wastage of the funds. Or let me make it easy for you to understand. Let's say this pen, this stylus was budgeted for $95 in the plan, that during execution, when we were making the plan, during execution, we will purchase it in $95. Let's say during execution, when we actually go to the market and we purchase it in $100. So in this scenario, our CPI will be 0.95. This is the meaning of CPI. Project has spent so far $25,000 of its budget so far. How much more money it looks like you will need to complete the project? So can you just quickly go through these 4 options and tell me the right answer? 59,000 to 10. You for a purpose of the project has a total CPI spend on this project so far. How much more money do you plan to spend on the project? A seems to be right. बस यही हरकत उस बंदे ने की थी, उसका एग्जाम कैंसिल हो गया था। वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बोल रहा था। ठीक है। Answer C is the correct one. Okay, here sometime in the exam also you may find it easy, useful technique that is called as elimination technique. That out of 4 options given, shown, you say this cannot be an answer, this cannot be an answer. So total project is of 80,000. 25,000 you have already spent. CPI is not very bad, slightly okay. So anything equal or greater than 80 cannot be an answer. So just on the basis of this, although you can calculate it also, but just on the basis of elimination, you can still choose that answer. This 59,000 is the right answer. Here we will take a 15 minutes break. After 15 minutes, inshallah, we will resume, we'll continue. And now you must have got an idea that, okay, exam style, exam format, application we have done with. Now we are discussing the concepts only. So very useful terms coming ahead, inshallah, after the break. So see you after 15 minutes, inshallah. I have one question here. Yes, please. In the last sentence, it is written how much more money. Let's suppose if more is not written here. So then C is the right answer. C will be the right answer. So we have to take care of the words also, huh? Yeah. Okay, yes. Yeah. Here, spending efficiency. Can you just elaborate it? How this cost performance index? A little bit of 2 minutes talk. Okay, let me come back from the break. After break, inshallah, I will start from the same point, right? Okay. Thank you, sir. You're welcome. Please keep connected. Do not leave the meeting. So I will leave it open. So after just the break, 15 minutes, you can come back.
Okay, let's start now. Yeah, walaikum salam. Yeah, Pareen, it was break, so we are just resuming now. Okay, someone was asking something. What was that point before the break? Yeah, assalamu alaikum. Waalaikum Regarding the elaboration of CPI and the last question of total budget was $80,000 and the CPI was 0.95. Right. And the project has spent $25,000 of its budget so far. Right. So I will come to your point. So the first point I mentioned that CPI is spending efficiency. So you requested to elaborate. So let me know if it is clear or not yet. We are saying CPI is a key performance indicator. It tells that how the project is going on. So if CPI is equal to 100% or 1, that means we are going exactly as per plan. Our efficiency is 100%. Whatever was the plan, we are spending every dollar according to the plan. Is it okay? Up now till this point? now the CPI of 0.95% is means we are efficiently spending. It has to be spent $1, so we are spending Up till this $0.95. point, I just explained you 100%. I will come to 0.95. So just tell me 100% is okay? Yeah. Okay. If we say our CPI is 1.1, that will mean 110%. Yeah. So 110% means we are saving 10%. We have purchased something. In the budget, we kept $1,100 for that in the plan. But actually, during execution, we were able to get it done or purchase in $1,000. So in this example, our CPI is 1.1. Is it clear, Jafar? Sir, now here it will be overspending, no, sir? Like No. 1,100. 1100 की चीज थी, आपने 1000 में खरीद ली, तो ओवर स्पेंडिंग कैसे हुई? Okay. क्लियर हो गया? Then yes. सिमिलरली अगर हम कहें कि 1000 की चीज या 950 की चीज थी, प्लान में हमने रखी और हमने 1000 में खरीदी. We planned for $900, but we actually purchased that in $1,000 during execution.
So here our CPI in this example is 0.9. In this example, it is 1.1. In 1.1, it is saving. In 0.9, it is overspending. Is it clear now? Yeah. That was the point. Right? Okay, any other question? Or so mean to say that we have to take the reference or the benchmarking only from the planned cost exactly. estimated. Yeah. Okay. We have no other way. Plan is the Yeah. thing that was approved by the important stakeholders. Okay. Right? हमारा आइन जो है वो तो वही है, प्लान है. अच्छा बुरा डिस्कशन हो चुकी. तो अभी इधर जो सीपीआई हमारा 0.95 है, दैट इज ओवर स्पेंडिंग, राइट सर? स्लाइटली ओवर स्पेंडिंग. बहुत बुरा नहीं है, लेकिन हमने हर 100 में से 5 रुपए जाया कर रहे हैं. ओके. तो 5% वेस्टेज ऑफ फंड्स. ये 5% कैसा हो रहा है सर? ये 0.95 मतलब सीपीआई इज नो एज पर द प्लान, द सीपीआई इज अब ये तो प्लान बता नहीं रहा था, द टोटल बजट ऑफ द वो जितना भी है, वो 1 करोड़ है, 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, 1 ट्रिलियन है. ओके. हम हर 100 में से 5 जाया कर रहे हैं. ओके. तो बजट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस सिनेरियो. ये रेशियो है, परसेंटेज है. लेकिन ये परसेंटेज सीपीआई ऑफ 0.95% इज रेफरेंस टू वन और इज इट रेफरेंस टू व्हाट? अगर आप नंबर में बात करेंगे तो वो 1.0 के रेफरेंस है. अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% के रेफरेंस है. ओके, रेफरेंस इज 100% ऑलवेज. ओके सर, इससे जो मैंने जो जी आपकी आवाज बंद हो गई है. ऐसा ही है सर. जी आ रही है. जी Huawei Y9 Prime 2019 भाई, आप बोलिए. Okay, anyone else? Jafar, is it clear? 100% clear now? सर इधर थोड़ा मुझे फिर भी थोड़ा डाउट आ रहा है सर. सॉरी टू जल्दी से पूछें, जल्दी से पूछें. ये सीपीआई ये 0.95%, ये बेंचमार्किंग किससे करेंगे हम लोग? प्लान में क्या है? वन से प्लान में जो भी है. हाँ ओके, वन. ओके हाँ ठीक है. ओके. तो प्लान में जो भी वैल्यूज हैं हम उसमें से कंप्यूट करके इसको निकालेंगे हमेशा इसी के अराउंड 1.0 के. ओके. वो चाहे 10 मिलियन का प्रोजेक्ट था, चाहे 37 मिलियन का था, चाहे 70 मिलियन का था, CPI will always be around 1.0, either greater than 1.0 or less than 1.0. Okay. So that is your benchmark for, or KPI for project monitoring. Just by looking at CPI, you can tell within 1 second the project is going good or bad, saving or overspending. So that's why I said CPI is the most important KPI in project management. तो इधर तो हम लोग सेविंग्स कर रहे हैं ना सर? सीपीआई ऑफ 0.95% इज सेविंग्स. नहीं, चलें आप यहाँ पे होल्ड करें. Let me finish the other topics. You still have some confusion, so at the end of that today's lecture you can ask me again, right? तो मैं आपको थोड़ा मजीद डिटेल में समझा दूंगा. ये हम सेविंग नहीं कर रहे, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, let me go to the next question. Okay, now sometimes they ask questions like this also, but as I told you, now the calculations are not coming, but still it's a very important topic or concept to understand. Let's say we have 9 activities in a project, A, B, C, D, E, F, G, H, and I. Their durations are given 5 days, 6 days, 4, 3, 1, 4, 14, 12, and 2. Their predecessors are given. Predecessor means prerequisites. So if A has no predecessor, what does that mean? Can anyone tell? Very easy concept. No other activity before A. Yeah, so what does that mean? It's a starting activity of project. Starting activity of the project, or whenever we start the project or whatever is the starting date of the project, this activity, if we like, we can start immediately.
Same is the case with B. What about C? A is the predecessor. C can be done only when A is finished. A is finished. D is finished. D can be started when A is finished. E is also dependent on A. F is dependent on E. G is dependent on D and F, both. So when both D and F will be done, then we can start G. B and C is dependent on H, and G and H is dependent on I. So if this is the situation, can you tell me, or can you do some quick calculation and tell me what shall be the duration of the project? C start to finish. ये होने के बाद में C होता है. days. ये 77 किसने कहा है? 77 तो है ही नहीं उसमें. वो तो ऑप्शन ही नहीं है यार. Sorry about that. जी जनाब. Can anyone tell me the answer? What shall be the project duration here? I think sir 26 days होगी. 26 कैसे निकाला आपने? आपका आंसर ठीक है. निकाला 26. कैसे? ठीक है आपका आंसर. कैसे निकाला आपने? Okay, first we will start with A and B simultaneously. Right. Okay. After 5 days, A will be finished. So immediately we can start C, D, and E. Okay, here we are checking that the maximum days C is taking. Okay. So we will add 5 plus 4. Okay. Right. So within this got time, it. this Yes, D you are and right. E- You are right. Your answer is right. And this topic is called as critical path method. We will discuss in detail in the full course, inshallah. Just to quickly tell you what we do, we make a network diagram and we find all the possible paths between start and end node. Here, so there are 4 paths here: ADGI, AEFGI, ACH, and BHI. So these are the 4 paths in this, and then we add up the duration of each activity. So the total path duration is 24 days, 26 days, 23 days, 20 days, and the longest path in terms of time duration, 26 days, that is called as critical path, and that is the duration of the project also. So 26 is the right answer. Before discussing, we will get the Yes. stationery there in PMP exam while doing it on a computer. You will get it. You will get it. You will get some boards on which you can write, make the diagrams with the markers given, or you can erase also. So duster will be also provided. Okay, some cartoons before we discuss some more topics. So this is how a project is completed. When a deadline comes too close, this is how a project is completed. So you can understand we start with perfection in the beginning, with high motivation, high perfection, but later on somehow, just like the Pakistan cricket team, the way they finish the matches. So this is how Pakistan team finishes the matches. So this is how the project is completed when the deadline comes too close. She asked, why do you have only 40% of an umbrella? He says chances of rain is only 40%. So one way of looking at the things from the perspective of risk management. People who have who deal with the clients, they know the pain behind this cartoon. Who are we?
We are clients. What do we want? We don't know. When do we want it? Now. So this happens. हर client की ऐसी कहानी होती है. Some person already jumped from the plane, and after he has jumped, now there is an announcement. Okay, there is a small change. Red bag has the sandwiches and green bag is your parachute. So too late to inform him. The change management and communication management, extremely important areas, but unfortunately on the projects, we do not give enough importance to these. So now we will discuss some more slides about the course contents and some more concepts, and then we will inshallah finish. So project management, the application, the definition of project management, the application of skills and methodologies that allow to deliver a project on time, within budget and to the specification. So as a project manager, I have to apply whatever we will learn or you already know, the project on time or closest possible to the time, on budget or closest possible to the budget with slight variation, and scope. The specification means the scope. So if you deliver whatever was agreed in the best or closest possible budget and to the best or closest possible time, then we can say you have done good project management. Projects are always temporary. They have some start, they have some end, they have some objectives. They are progressively elaborated. Progressive means step by step increasing. Elaboration means more details. So that means when we move into the project with the passage of time, we receive more information. When we receive more information, we can use that information in refining our plans. So projects are progressively elaborated. Why we do the projects? Projects are done to grab some opportunity. Now there are two perspectives here. One perspective is customer side. Second perspective is contractor side. First, understand the contractor side. Why contractor works on the project? The only motive behind is to earn money or revenue. How they earn money or revenue? By offering their resources, technology, consultancy, knowledge to the customer. Against that, they charge. So during the life of the project, who is earning? Contractor is earning. And who is investing? Customer is investing. Customer Or is the client investing. Right? So customer is spending, contractors or suppliers are earning. And when the project is finished, then what happens? Customer starts taking the benefit of that product they have developed. Right? So they earn from the operations. Customers earn from the operations. When the product becomes operational, you are making a shopping mall. So making a construction of a shopping mall is a project. When it will be finished, launched, becomes operational, project is finished, operations start, revenue starts coming. That goes in the pocket of the sponsors or the investors. So this is the scenario here. So who decides to start a project? Of course, that is the decision of the customer and what is the possible set of reasons behind. So we can say they are starting a project to grab some opportunity in the market, first to market, or market demand, or capacity building. What is meant by capacity building? Very easy question. Can anyone tell?
Yes, please. The supply of a specific product is less in the market. Okay. Like little bit of difference of like supply chain management. Sorry, your voice is not very clear. Like supply chain management, like how you do the demand and supply. Capacity building means whatever you are doing, you multiply, you increase. Let's say we are a manufacturer and we are producing, let's say, 10,000 cars every year. We say we want to produce 50,000 cars every year. So what we will have to do? Maybe we will have to install more equipment, more machinery, more facilities, more team, more training, different processes, more technology, maybe. Right? This is something like debottlenecking. There can be dozens of terms, right? So this is the meaning of capacity building. For another very easy example to understand, one of the biggest projects maybe you have seen around you. Can you name some biggest projects around you in your life? Very big project. Yeah, we are a polypropylene manufacturing company. Okay. The annual production is something around 450,000 metric tons of polypropylene we produce. Now there was a capacity building and it has increased to 520. How much was the tons. budget of that capacity building project? The capacity building project was very minimal, like I can remember that is something around 60 to 70 million reals. Okay, 60 to 70 million reals. Okay, I'm sure many of you can give examples of projects much bigger than that. Yes, please. Any big projects with the budget? Any rough budget? I live in Jeddah. In Jeddah, there is a demolition work is going on, and also another project of NEOM, in which they has a plan to invest $500 billion. Or you can say NEOM is not a project, it's a program, right? Or a portfolio under which we may say there are hundreds or thousands of projects. Some projects are of billions of dollars, some projects are of millions of dollars. In Jeddah, you have so many projects. New Jeddah airport, right? Yeah, Jeddah airport and this Haram expansion project. Haram expansion is about exactly. Right, so Haram expansion project. Haram will come capacity building. It definitely goes to the capacity building. Umrah and Hajj operations expansion. So maybe you can say dozens of billions of dollars just to expand the same operations, right? Same operations. Similarly, SABIC and Aramco, they are installing more and more refineries and establishing and just to increase the capacity. Right, they are also spending multi-billion dollars. Riyadh Metro project, any idea about the budget of that? It will be huge, I believe. Yes, anyone? Riyadh Metro project. लोग कहते हैं लाहौर की मेट्रो बड़ी महंगी है. So maybe $28 billion. How many? $28 billion. Yeah, I remember something like this. Initially, it was $22 billion, and later on, some scope reduction and reduced and revisions, it came down to just $17 billion. So $17 billion is a huge amount, right? लोग कहते हैं जी लाहौर की मेट्रो दुनिया की महंगी तरीन है. But in which category you will put that project? You can say market demand or market demand. You can say no I believe regulatory requirements. Or the government. What regulation it will come under? No, like, that is market demand. No, I don't think. Like they already done one project of this Harman Railway fast train, and it is still a flop project. They have invested a huge amount in it, but still they are unable to attract the customer, and money isn't waste. That is fine.
money माफी मुश्किल, money माफी मुश्किल, regulatory requirement नहीं कहेंगे ना इसको हम. Grab No, some regulatory opportunity. requirement is a requirement or from the some regulatory government authority. responsibility. Government responsibility, akhlaqiyat, yes, it can come under that, or care of their people, or facilitation of the business, or maybe long-term vision that maybe There after are 20 years there it are will be many like projects. Dubai, right? So yes, in order to do that, so maybe the safest option will be market demand, no way related to regulatory requirements. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस साल से पहले हर घर के बाहर एक लाल बत्ती लगी होनी चाहिए, ये होती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. So there is nothing like that. CCTV cameras, right? So something like that. So it is nothing related to regulatory requirement. Or you can say the high-rise buildings, right? High-rise buildings, every high-rise building should have a blinking red light. What is the purpose of that? To give an indication to the air traffic. That is a regulation. No, in our plan, we have a lot of regulatory requirements regarding to environment, like analyzers, we will establish many. Yeah. So that is a regulatory requirement. Right. Or if if the government or ministry says that every company dealing with this business should be ISO certified. Yeah. That will be called as a regulatory requirement. Right. Okay. So technology change means like 3G to 4G, 4G to 5G, or cell phone to smartphone. For example, Nokia, if you remember, Nokia 3310, one of the most sold telephones, mobile sets. So Nokia was number one up till a certain point. But when the technology changed from cell phone into smartphone, somehow Nokia could not survive. They could not sustain. So it happens when the technology changes, the companies, new companies appear and the old companies disappear, and just because of the reason they do not upgrade their products on a timely basis. So if you upgrade your products, that is called also a reason, it's also a project, and the reason behind that is technology advancement. Regulatory requirement, now just you mentioned, let me explain that. Very easy question. What is the difference between standard and regulation? Can anyone answer that? Standard is basically more of like a procedures. Like for example, you have SOPs in the hospitals. That's like a standard operating procedures or any guidelines which has been given. Regulation is like a framework. But you need to have a proper regulation for everything. By law, you have to choose it by imposed by the government. Okay. Or by Anyone else? Yes, please. Can anyone else tell the difference? Regulations or the extra requirements following the standards. तो standard law बन जाए तो उसे regulation कहते हैं. Right. Very easy example. For example, let's say अगर आपको ये easily नजर आ रही होंगी, आप मेरे कैमरा में अगर देखें, दो bottles हैं, right? So these are two bottles of same size, 500 milliliters. Assume I have, right now it is from the same company. Let's say they are from different companies, right? एक Nestle की है, एक Aquafina की है. So what do you think? Can I interchange the caps of these two bottles? Yes or no? Most probably the shape of the bottle will be a little bit different, so you won't be able to change it, or maybe you will if the size is same. Okay, anyone else? What do you think? If No, you cannot change because the threads will be different, the bottles, there will be some difference in the mechanism of you the can cap try system. it. You can try it, and to your surprise, you can, right? Even if the size of the bottles is different. One bottle is 330, another is 500, or 1 liter. 90% of the bottles you can interchange the caps. The reason is they have standard size of the opening. But it is not a law. Some bottles, by chance, you can find some brands, some sizes, some specific design. They are using a different size. You cannot interchange the caps. But 90% you can easily change it. That is called as a standard. Any best practices, good practices around you, if you like voluntarily, you can adopt. But if you do not like, no problem. No one will come and ask a question why you are not making this.
But regulations, you like it or you do not like it, you have to follow. Agar aap follow nahi karenge, you will be in trouble. Someone can come and arrest you. Someone can come and seal your business also, impose fines also. So this is the difference between standard and regulation. So regulation, sometimes just to comply with the regulations, you need to do the projects. As I gave you an example, ISO, it's a standard, it's not a regulation. But if any ministry says that if you have to open a restaurant in this country, you must be ISO certified, for example. Now this compliance with this ISO standard becomes a regulation. In order to do that, maybe you will have to do the projects. Any question or confusion so far? No. So this regulatory requirement is instructed by the external factors. By the local bodies, most likely ministries. Okay. Right. So is there any other bodies other than government who can regulate the companies? Quick answer is no, unless until you come with a exception or example. But local law implementing agencies, only they are entitled to pass regulations. Right. Okay, I have one question. Initially, you told us that during this project, it has been funded by the customer and the contractor will get the benefit of it. During the course of the project, we have seen that contractor is investing in the project completion, and they will get reimbursed by the customer when the project is completed. So what this thing will be called in this project? First of all, that will not be called as an investment. Okay. Number one. That can be called as expenditure on the basis of assumption that it will be reimbursed later on. Right? कस्टमर आपको कहता है कि यार पहले 50% काम करोगे तो मैं फिर तुम्हें इतने % पेमेंट दूंगा. आप उस काम को करने के लिए you spend from your pocket, and when you submit the invoice, that invoice contains the profit also and expenditures also, and customer will reimburse you. So most likely that will be reimbursed or refunded to you with profit margins within a short period of time. So that is not considered as investment. Okay. Got it? Yeah. Okay, so project management is distributed in these 10 chapters, right? So all of you here are able to understand English and Urdu both? Or anyone who says, no, I do not understand Urdu or Hindi? Yes, we understand both. Both, okay, fine. So we can just, then we can gear up the speed also. Instead of first gear, we can go to second gear or third gear also. Okay. So the project management है basically आपकी ये distribute कर दिए 10 chapters में. यही exam के topics हैं. यही आपके training के topics हैं. यही आपके book के topics हैं. एक चीज इसमें implicitly add कर लें जो कि इसमें explicitly mentioned नहीं है. Maybe later on you may find this term somewhere and should not be confused. Agile methodology. Agile methodology any 10 chapters का part है implicitly. ठीक है? So these are 11 chapters, 11 topics which are in the scope of PMP. Scope management, schedule management, cost management, quality management, resource communication, the risk procurement, stakeholder, and integration management. These 10 we are going to cover in the full course. Right now, I will just give you brief introduction, just quickly के होता क्या है, ठीक है ना, एक मिनट, 2 मिनट के अंदर. Later on, we will spend 1-2 घंटे on each topic, inshallah. Right, in the full course, 35 hours course, inshallah. Scope management. Scope management, सबको पता है क्या होती है, लेकिन यहाँ पे if I ask you a question, can you tell me what exactly is the difference? Sometimes people use a term requirement. Sometimes they say scope. Can anyone tell what is the difference between requirement and scope, or are they same?
They are same. Scope and requirement are same. Anyone else? Normally we do this, we are part of a project management team and our working is engineering and design. We normally review the designs approved by our project department. The first document comes to us, it says the scope of work. We call it scope of work, project scope of work. Before project scope of work, one document initiated by the planning department, which they call it TOL. TOL contains the requirements, what has to be, but this is a very short document. After this has been transformed in the scope of work document, which is very comprehensive, contains every details. हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट और स्कोप में फर्क क्या है? अब आपने चूंकि यूज किया हुआ तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं हमें फर्क क्या है दोनों में? Scope is a broad definition and requirement I think specific. Okay जी, anyone else? क्या डिफरेंस होता है रिक्वायरमेंट और स्कोप में? Basically, scope, number of activities for the requirement. Anyone else? सर स्कोप ये है कि जो आपको असाइन किया गया है वो स्कोप होगा, जबकि रिक्वायरमेंट तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। एक्टिविटीज का वर्ड यहाँ पे ना यूज करना मुनासिब नहीं है, सो नॉट एक्टिविटीज, लेकिन बहुत सारी रिक्वायरमेंट या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उनमें से आपको क्या असाइन किया गया है वो स्कोप? चलें मुझे ये बता दें पहले क्या आता है, रिक्वायरमेंट पहले आती है, स्कोप पहले आता है? रिक्वायरमेंट पहले आती है, बाद में डिटेल स्कोप आता है। स्कोप पहले आता है शायद। स्कोप पहले आएगा। रिक्वायरमेंट पहले आती है सर, उसमें सिर्फ क्लाइंट डिसाइड करता है कि हमने क्या कराना है। रिक्वायरमेंट इज कि हमने एक घर बनाना है। स्कोप एक जनरल सी होता है, बनाना है, कितनी स्टोरी होगा। अच्छा, अगर हम कहें दो वर्ड में यूज कर रहा हूँ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, यस, इनको अगर आप मैच करें रिक्वायरमेंट पे और स्कोप पे, तो क्या चीज स्कोप प्रॉब्लम है या स्कोप सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम इज स्कोप, सॉल्यूशन है, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम है। यस, रिक्वायरमेंट इज कि आपको घर बनाना है, स्कोप इज आपने क्या बनाना है, एंड प्रॉब्लम इज स्कोप। डिलीवर क्या करते हैं आप? स्कोप डिलीवर करते हैं कि रिक्वायरमेंट डिलीवर करते हैं? स्कोप डिलीवर करते हैं। तो स्कोप डिलीवर करते हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि हम कस्टमर को एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इतनी मेहनत करने के बाद प्रॉब्लम डिलीवर करते हैं? नहीं, स्कोप डिलीवर करते हैं। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सोचने का एक अंदाज है कि स्कोप अगर आप कहें कि प्रॉब्लम है, तो आप तो प्रोजेक्ट करने के बाद स्कोप डिलीवर कर रहे हैं, तो क्या आप कस्टमर से पैसे लेके उसी को जाके आखिर में कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें चांद सी प्रॉब्लम दी है? ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो स्कोप इज बेसिकली सॉल्यूशन, रिक्वायरमेंट इज प्रॉब्लम। सो रिक्वायरमेंट इज द प्रॉब्लम, पर्पस, जस्टिफिकेशन, नीड्स, एक्सपेक्टेशंस के हम क्यों कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हैं। वेरी इजी एग्जांपल, लेट्स से आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं, ठीक है, आप फार्मेसी पे जाके उसको कहते हैं सेल्समैन को कि यार मुझे जो है ना बुखार हो रहा है, ठीक है ना। कई तो अब यहाँ पे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स में आप कर सकते हैं क्लाइंट्स की बैड हैबिट्स पे भी। कई लोग ऐਵੇਂ जाके कहेंगे मेरा दिल काऊ काऊ कर रहा है, कुछ दे दो मैनू, ठीक है। सो अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इफ यू गो टू दिस फार्मेसी एंड यू टेल देम दैट मेरे सर में दर्द बुखार है, ठीक है, तो आपने क्या कहा, अपनी प्रॉब्लम बयान की, अपनी रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्जेक्टिव्स। उसने आपको कहा सर आप ऐसा करें पैनाडोल ले लें, हमने कहा ठीक है दे दो, उसने आपको दे दी। तो उसने क्या किया, आपको सोल्यूशन ऑफर किया, आपने एग्री किया, आपने परचेज कर लिया, इसका मतलब है ये स्कोप एग्री हुआ था, उसने डिलीवर कर दिया, आपने पेमेंट कर दी। तो इस सिनेरियो में कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी, कॉन्ट्रैक्टर ने स्कोप ऑफर किया, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया और कहानी खत्म हो गई। कभी कभार क्या होता है, आप जाते हैं फार्मेसी पे, आप कहते हैं यार मुझे पैनाडोल दे दो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम भी पता है, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पता है। आप कहते हैं मुझे बस ये तुम डिलीवर कर दो। इसका मतलब है कस्टमर हैज ऑलरेडी डन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड दे हैव ऑलरेडी डिफाइंड द स्कोप। They just tell the contractor that give me this thing,
दिस इज द बाउंड्री। तो कभी कभार रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की तरफ से, कभी कभार स्कोप आ जाता है। लेकिन जब स्कोप आता है इसका मतलब है कस्टमर ने अपने घर में पहले से एनालिसिस कर लिया हुआ है, उसको मालूम है क्या चाहिए। तो प्रोजेक्ट की लाइफ में हमेशा रिक्वायरमेंट पहले आती है फिर स्कोप आता है। एनी क्वेश्चन और डाउट ऑन दैट? I think it's clear now. सो एक्टिविटीज जो होते हैं ना वो स्केड्यूल का पार्ट है। आई विल कम टू दैट पॉइंट। सो right now I'm just explaining you the terms only and selected terminology only. So in scope management we have requirement collection. We first collect the requirements, and according to that requirement, after doing the analysis, we define the scope, and then we create WBS. Any idea what is WBS? किसी को कोई idea हो? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। Work breakdown structure होता क्या है? You simplify the structure, you simplify the project, you break down the work into smaller activities, into smaller एक्टिविटीज का activities. वर्ड नहीं यूज करना अभी, ठीक है? Okay. उसकी एक रीजन है, मैं आता हूँ अभी इसकी तरफ। ना एक्टिविटीज का ना टास्क का, ना एक्टिविटीज का ना मतलब नहीं, एक्टिविटीज भी नहीं टास्क भी नहीं, दोनों यहाँ पे गलत होंगे। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा उसको। मैं ब्रांचेस में मतलब हम लोग डिवाइड करते हैं एक बड़ा जो हम कह स्कोप होता है सकते तो हैं, हाँ स्कोप को कह सकते हैं कि छोटे डिलीवरेबल्स में कर देते हैं, जी ठीक है? डिलीवरेबल इज द राइट टर्म फॉर दैट। सो बिगर डिलीवरेबल्स वी डिकम्पोज इनटू स्मॉलर डिलीवरेबल्स, राइट? सो एक बड़ी चीज होती है, हम उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं। वो पंजाबी का एक लतीफा ना यार, जहाज एडा वड्डा होंदा है, पेंट किवें करीदा है? वो कहते चल छड़ पागल तू, इन्हें नहीं पता। तेन पता जो उड़ता है हवा जाता निक्का जिहा हो जाता है, ठीक है? उस वेले पेंट करीदा है ना। तो actually this is the way to simplify the scope. Some projects have very big scope, huge scope, so it is not possible to plan that unless and until we decompose it into smaller manageable pieces. That is called as WPS. Very easy example, यही अपने जो प्रोजेक्ट की बात की थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमने कहा जी ये जो है ना बड़ी ब्ला है। अच्छा जी, ब्ला को कैसे काबू करें? इसके 10 चैप्टर्स बना दिए। तो क्या किया हमने? हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, हमने इसका WBS बना दिया। फिर हमने कहा अच्छा यार स्कोप भी कोई इतनी कोई इजी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, तो क्या करें? कहते हैं अच्छा जी कोई बात नहीं, इसके 6 टुकड़े कर दिए हमने। तो हर टुकड़े को अलग अलग मैनेज और एस्टिमेट और प्लान कर लिया। So that is basically the concept of work breakdown structure. But remember, we are still talking about scope, deliverables, no tasks or activities yet in the picture. वो स्केड्यूल मैनेजमेंट के अंडर आती हैं, वो टाइम में आती हैं, ठीक है? तो अब मिसाल के तौर पर आपने कहा घर बनाना है, तो एनालिसिस करना स्कोप है, डिजाइन करना स्कोप है, प्रोक्योरमेंट करना स्कोप है, उसके लिए मार्केट विजिट करना एक्टिविटी है, उसके लिए मेजरमेंट्स करना एक्टिविटी है, उसके लिए ड्राइंग्स बनाना एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज और टास्क एक ही चीज है, ठीक है? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है WBS का। सारी टर्म्स ही बोलूंगा अभी, सिर्फ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स का एक्सप्लेन करूंगा। स्केड्यूल मैनेजमेंट में आ गया। स्कोप मैनेजमेंट में वंस अगेन टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, स्कोप मैनेजमेंट फोकसेस ऑन व्हाट, कि निकलेगा क्या इस प्रोजेक्ट को करने के बाद, वो जो निकलेगा उसको डिफाइन करना है, वो स्कोप है। स्केड्यूल मैनेजमेंट फोकसेस करती है हाउ को, कैसे बनेगा, क्या बनेगा स्कोप में डिफाइन हो गया, कैसे बनेगा स्केड्यूल में डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे एक्टिविटीज निकालेंगे। एंड एज आई मेंशन्ड, सम पीपल हैव दिस बिग मिसअंडरस्टैंडिंग कि शायद एक्टिविटी और चीज है, टास्क और चीज है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। आप लोगों में से किसी ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज किया है? जी किया मैं। किया हुआ है।
माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आपको एक्टिविटीज नजर आई कहीं या टास्क नजर आए? जी उसमें टास्क होते हैं, टास्क और होते हैं। जी आपको एक्टिविटीज नजर आई उसमें या नहीं आई? एक्टिविटीज मेरे ख्याल से टास्क जब हम डाल देते हैं तो जब WBS की क्रिएशन में जाते हैं तो वो खुद ब खुद वो एक दे देते हैं। अच्छा, सब टास्क नजर आए कि नहीं? जी सब टास्क है नजर, टास्क भी अच्छा, है, सब टास्क भी टास्क भी है। है, सब टास्क भी, एक्टिविटी नजर नहीं आएगी आपको उसमें, ठीक है। जी प्राइमावेरा किसी ने यूज किया हो? P6? मैंने प्राइमावेरा की ट्रेनिंग आपसे की थी जुबेल में। और अच्छा जुबेल में, उधर कुक जोन में? जी मेरे ख्याल से जी। आई एम PMP सर्टिफाइड और आपसे मैंने काफी चीजें वो की है, बस वो देखा आपने अबू अच्छा बकर साहब दे सर, रहे हैं तो जस्ट फॉर मोस्ट रिफ्रेश। वेलकम, मोस्ट तो वेलकम जी, आपकी मोस्ट ट्रेनिंग वेलकम। वाज रियली हेल्पफुल फॉर PMP अल्हम्दुलिल्लाह, सर्टिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, प्राइमावेरा किसी ने यूज किया P6? जी सर मैंने किया है। तो P6 में आपको एक्टिविटीज नजर आई या टास्क नजर आए या दोनों? एक्टिविटीज। एक्टिविटीज नजर सर आए। एक्टिविटीज होती है उसमें। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं यार ये दोनों फर्क होती हैं, अगर फर्क हो तो फिर दोनों में दोनों चीजें हों। प्राइमावेरा में भी एक्टिविटीज नजर आए, टास्क नजर आए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी एक्टिविटीज और टास्क दोनों नजर आए, नहीं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क है। प्राइमावेरा यूज करता है टर्म WBS एंड एक्टिविटीज, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज करता है टर्म टास्क एंड सब टास्क। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। WBS को खींच थ्रू के उसने जो है ना वर्क अराउंड उसका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने टास्क एंड सब टास्क डाला हुआ है, दे कॉल इट एज WBS, ठीक है। WBS का अलग से भी फीचर है उसमें, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। तो टास्क और सब टास्क इज बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल टू WBS एंड एक्टिविटीज इन प्राइमावेरा, सो देयर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। तो हम एक्टिविटीज या टास्क डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनको सीक्वेंस कर लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या है? रिलेशनशिप्स निकाल लेना, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश एंड फिनिश टू फिनिश। 4 टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं। उसके बाद एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन करते हैं, ये 4 दिन लेगी, 5 दिन लेगी, 6 दिन लेगी। उसके बाद क्या करते हैं? क्रिटिकल पाथ निकाल लेते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट की डेट्स निकल आती हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन स्केड्यूल मैनेजमेंट। देन कॉस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटीज आपने ऑलरेडी निकाल ली हुई हैं पिछले स्केड्यूल मैनेजमेंट से। हर एक्टिविटी के अगेंस्ट आप क्या करते हैं? रिसोर्सेज डिफाइन कर देते हैं। इतना, रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं, कोई बता सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन। काफी सारे रिसोर्सेस होते लेबर, हैं। नॉन लेबर, मटेरियल। लेबर, नॉन लेबर एंड मटेरियल। लेबर को हम कहते हैं मैन पावर, मैन ठीक है। पावर। हाँ, 3M। नॉन लेबर को कहते हैं मशीन, मशीन या इक्विपमेंट। और मटेरियल को मटेरियल ही कहते हैं, जो भी कंज्यूमेबल्स हैं। तो हर टाइप की लेबर, नॉन लेबर, मटेरियल हम डिफाइन कर देते हैं एक्टिविटीज के अगेंस्ट, और उनके पर आवर पर यूनिट रेट्स भी डिफाइन कर देते हैं कि ये जो टेस्टर है, ये क्वालिटी इंजीनियर है, ये QC वाला बंदा है, ये फलाना है, ये इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, क्रेन का ये रेट है, एक्सकेवेटर का ये रेट है। उसके बाद मटेरियल भी डिफाइन कर देते हैं, सीमेंट का ये रेट है, स्टील का ये रेट है, सरिये का ये रेट है, सारा कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर, इनमें बिल्ट इन कैलकुलेटर्स तो होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस लगा के आपको एक्टिविटी की कॉस्ट, WBS की कॉस्ट और टोटल एट द एंड प्रोजेक्ट की कॉस्ट, ये सारी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू इन द कॉस्टिंग एंड बजटिंग। बजटिंग में हम एक टर्म यूज करते हैं, एक तो रिस्क रिजर्व्स एनालिसिस होता है, वो एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन इन द फुल कोर्स इंशाल्लाह। एक और टर्म होती है कैश फ्लो की। एनी आइडिया, क्विक आंसर, व्हाट इज कैश फ्लो? The process of cash expenditure during the duration of the project. मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट आपका है 10 मिलियन का और ड्यूरेशन है 12 मंथ्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि हर महीने हमें इक्वल अमाउंट चाहिए? Not necessary. नॉट। तो शुरू में ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? बिल्कुल शुरू में, पहले 1, 2, 3 हफ्ते शुरू में में ज्यादा चाहिए।
शुरू में कम चाहिए, उसकी वजह क्या है, हमने सिर्फ बातें करनी है, मीटिंग्स में बैठना है, प्रिंट निकालने हैं, डिस्कशंस करनी है, ड्राइंग्स बनानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम एग्जीक्यूशन से पहले जब प्रोक्योरमेंट करने पे आ जाएंगे तो फिर हमें एडवांस पे करने हैं, चीज़ें खरीदनी है, मटेरियल खरीदने हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता है। फिर आखिर में जाके फिर थोड़ा चाहिए होता है। तो ये होता है कैश फ्लो कि कब कितना कितना चाहिए आपको। तो ये भी इसमें बजटिंग का पार्ट आ जाता है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी आई एज्यूम कि सबको पता है क्वालिटी क्या होती है, हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल। राइट नाउ आई विल जस्ट फोकस ऑन टू टर्म्स, QA एंड QC। एब्रीविएशन हर बच्चे को पता है, QA इज क्वालिटी एश्योरेंस, QC इज क्वालिटी कंट्रोल। एब्रीविएशन या फुल फॉर्म के अलावा मुझे बताएं क्या डिफरेंस है, एनीवन? Excuse me, आप kindly repeat कर सकते हैं your last question? माय क्वेश्चन इज, क्वालिटी में हम दो टर्म्स यूज करते हैं, QA एंड QC, राइट? Quality control is the control of the quality over the duration of the project. It is the quality control of the project. The quality assurance is the standards what we put in the scope, and it is something like a standard. We are going to assure this quality. Quality control is a process. Actually both are processes, right? So can anyone else try to explain the difference? Meanwhile I'm writing the full form also. Quality assurance, yes please, can anyone tell me the difference? Most probably assurance is like a commitment you make in the beginning that the quality of work will not go that like control. Sorry, वो noise था तो मैंने mute all कर दिया. Yes please. Can I answer? Yes please, well? please. Quality assurance is the record of control, yani all the documentation, and quality control is physically what is. पहले कौन सी होती है, QA करते हैं कि पहले QC करते हैं, या दोनों पहले करते हैं? QA पहले QA सर पहले होगी, QC बाद में। किस चीज के बाद होगी QC? किस पॉइंट पे QC करेंगे हम? QA जो है वो सबसे पहले बनता है हमारा प्रोसीजर, क्वालिटी प्रोसीजर। क्वालिटी प्रोसीजर के अंदर ही क्वालिटी को इश्योर किया जाता है। फिर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए उसी प्रोसीजर से ही फॉर्मेट बनते हैं हमारे क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। QC is more like auditing. That once you set up the benchmark, then you keep on auditing it and on phases. That is quality control, to check that if the quality is maintained or not. Audit किस स्टेज पे आता है? QA में आता है? Audit जो है QA में आता है, QC में आता है? QC में। QC। अच्छा, ये फिर मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको क्योंकि थोड़ा नॉइज है। यस प्लीज। QC में आता है, आपने कहा ऑडिट QC में आता है। अच्छा, एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, बिफोर मेकिंग दैट प्रोडक्ट एंड ड्यूरिंग मेकिंग दैट प्रोडक्ट एंड आफ्टर मेकिंग दैट प्रोडक्ट, इन 3 स्टेजेस पे आप QA एंड QC फिट कर दें मुझे। बिफोर में जो है QA आएगा और ड्यूरिंग और आफ्टर में QC आएगा। All of you agree with this or different? No, sir, I am different. Quality assurance is at last, and audit is also covered in quality assurance. Quality assurance आपने कहा आखिर में आएगा। अच्छा, मैं भी इससे एग्री करता हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस एंड पे आना चाहिए। कंट्रोल इज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, आप डिफरेंट पैरामीटर से कंट्रोल करते हैं, तो एश्योरेंस के हाँ ये हमारी चीज इस लेवल की है। चलें, किसी और ने कुछ बोलना है तो बिफोर आई म्यूट ऑल, एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग? यस मेरा प्लीज। ख्याल है क्वालिटी एश्योरेंस स्टार्ट में है कि हम श्योर करें कि हमने क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है, प्रोसेस प्रोसीजर्स ये चीज। एज पर दैट वी विल चेक क्वालिटी एश्योरेंस है ना। Quality assurance basically are the written set procedures that are made to maintain or manufacture any product. Quality control is done while manufacturing, during the manufacturing process, and in which the written set procedures are implemented basically. That it will be the weight of the product will be this much, the size of the product can be this much. This is done in assurance.
but quality control basically implements all the written set procedures while manufacturing. चलें, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आप सब लोगों से। कभी आप किसी मॉल में जाते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेने, तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि उस बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है? उस स्टिकर पे क्या लिखा होता है? उस पे कई दफा स्टैंडर्ड्स भी होते हैं कि जैसे नहीं, क्वालिटी से रिलेटेड कभी QC पास, QC पास्ट, QC पास्ट, QC चेक्ड, QC अप्रूव्ड, इससे मिलते जुलते स्टिकर्स लगे होते हैं। ठीक है, कभी आपने आज तक देखा हो किसी बॉक्स पे लिखा हो QC फेल्ड? ऐसा हुआ कभी? वो तो फिर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगी, वो मार्केट में नहीं आएगी, तो किधर जाएगी वो? फीडबैक सर वो दोबारा आती है से मार्केट में, वो भी आती है, वो मार्केट में वो भी आती है, लेकिन वो लो एक अलग प्राइस अलग अलग एक प्राइस है, वो है बी पेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो एक अलग तो अभी अभी पाकिस्तान में जस्ट आएगी। नहीं हर जगह ही आ जाएगी। अच्छा, तो वो दैट इज अ डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी। अच्छा, क्यूसी फील्ड जो होता है वो किधर जाता है? वापस रीवर्क में या डिस्कार्ड में। ठीक है, टेक्निकल लोगों को कहते हैं क्यूसी वाले कि भाई ये, तो वो क्यूसी जो है स्टिकर, वो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है कि बेसिकली क्यूसी इज अ लेयर बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर, वो लेयर खड़ी है। वो जब कहेगी कि हाँ इसको प्रूव कर दो, ये अप्रूव्ड है, तब वो सेल्स में जाएगा, तब वो कस्टमर की डिलीवरी को जाएगा, वरना क्या होगा? वापस जाएगा। इससे सब लोग इत्तेफाक करते हैं? अगर कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो जी बताएं। बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यही वजह है। यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर, मीटिंग के अंदर कोई बंदा क्वालिटी डिपार्टमेंट से हो तो बताए प्लीज, ऐसे हम उसके खिलाफ बातें कर लें, फिर बाद में पता चले वो सर आपने दिल दुखा दिया मेरा। है? सर मैं वली मोहम्मद वली मोहम्मद, आप क्वालिटी डिपार्टमेंट से हैं? जी सर। जी अच्छा सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह QC सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या सुपरवाइजर साहब आपका नाम क्या है सैमसंग के अलावा? एहसान अली खान। एहसान अली खान। तो एहसान और वली मोहम्मद, आप लोग जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या बाकी डिपार्टमेंट वाले आप लोगों को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं? सर बिल्कुल पसंद नहीं करते। मोस्टली क्या पसंद सारे करते हैं सर? तो ये एक दुनिया की रस्म है, ठीक है, जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। ये एक बिहेवियर है जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। यही आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्यूसी का रोल क्या है। ये जो मैंने कहा ना, क्यूसी वाले कहते हैं ये तो हमने अप्रूव करना ही नहीं है, वापस ले जाओ, इसको ठीक करो। दिस इज द पॉइंट वेयर दे स्टार्ट हेटिंग क्यूसी पीपल। क्यों? वो कहते हैं यार हमने तो अपनी तरफ से सोना बनाया है, हीरा बनाया है, ये देखो इसके पास लेके ये कहता है कूड़ा बनाया है, इसको ठीक करो, वापस ले जाओ। सो एक्चुअली क्यूसी वाले तो अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे। तो तुम लोग अपना काम सही नहीं कर रहे, वो कीड़े निकालते हैं। जब वो कीड़े निकालते हैं तुम उनके ऊपर बातें करते हो, नापसंद करते हो। बट ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट वी मस्ट रिस्पेक्ट क्यूसी बिकॉज दे नो कि लोग उनको पसंद नहीं करते। They sacrifice their personal and social relationships just for the sake of quality. So this gives you an idea that what exactly is QC. QC is to find the defects. अब फाइंड द डिफेक्ट्स किस में होगा? प्रोडक्ट बन जाएगी तो तब होगी, या प्रोडक्ट बनने से पहले हम डिफेक्ट फाइंड कर लेंगे? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, क्योंकि स्टेज इंस्पेक्शंस भी होती हैं। नहीं, और स्टेज फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन भी हम होती ये कह सकते हैं कि वो स्टेज जब कंप्लीट हो गई तब हम कर रहे हैं। ठीक तो है, बन जाए उसके बाद। तो है। नहीं सर, एक्चुअली प्रोसेस क्यूसी, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको हम क्यूए कहेंगे, उसको हम क्यूए कहेंगे। ठीक है, तो क्यूसी जो है, अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट या आर्गुमेंट हो सकती है। एक प्रोसेस का आउटपुट अगर आप चेक कर रहे हैं वो क्यूसी है, अगर आप किसी प्रोसेस का इनपुट चेक कर रहे हैं तो वो क्यूए है।
ठीक है, अगर ना समझ आए तो मैं जब क्लास फिनिश कर लूँ दोबारा मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो आपने जब किसी चीज़ को कंप्लीट कर लिया, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट थी या स्टेज थी, आपने उसकी आउटपुट चेक की और उसको स्टैम्प कर दिया कि ये अब या तो नेक्स्ट स्टेज में यूज़ होने के काबिल है या ये कस्टमर को डिलीवर करने के काबिल है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कॉल इट एज QC पास्ड और QC अप्रूव्ड और QC स्टैम्प्ड। So QC is basically, the role of QC is to find the defects in the product, and role of QA is to, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या fill in the blank आएगा? यहाँ QC is to find the defects in the product and QA is to Assure the product. Standardize the quality. avoid the defects in the product, preventive. So prevention जो है वो QA है। अब प्रिवेंशन जो है कब होगी, पहले होगी या बाद में होगी या ड्यूरिंग होगी? इनिशियली होगी, पहले होगी। बाद में हो सकती है कि नहीं हो सकती प्रिवेंशन? पहले बाद में तो कभी नहीं हो सकती, ठीक है जी, नहीं होती। पहले हो सकती है, ड्यूरिंग हो सकती है कि नहीं? हो सकती है सर, हो सकती है, ड्यूरिंग भी हो सकती है। सो QA जो होता है ना वो बिफोर भी होता है, ड्यूरिंग भी होता है, QC हमेशा आखिर में होता है, आफ्टर होता है, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जांपल, बिरयानी बन रही है आपके घर में, ठीक है, तो बिरयानी बनने से पहले आपको हिदायत मिलेंगी कि ये चावल फलां जगह से लेके आना, गोश्त फलां जगह से लेके आना, वरना मेनू ना कहना बाद, ठीक है। सो दैट इज QA। बिरयानी पकने के दौरान जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी चक चक के आप मसाला काम ज्यादा करते हैं, दैट इज ऑल्सो QA। बिरयानी पक गई है, आपने चख के कहा वाह वाह ये आज बड़ी जबरदस्त बनी है, दैट इज QC। एनी क्विक क्वेश्चन बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Resource management. Resources, as I told you, there are three types of resources: manpower, machine, and material. So somewhere we use terms team. Team means manpower, and somewhere we use term resources. Resources means all three types. तो कुछ ऐसे process होते हैं जो general होते हैं तमाम type के resources के लिए, कुछ होते हैं जो सिर्फ manpower के लिए होते हैं। For example, conflict management. अब कौन लड़ेगा? कौन? मशीनें तो लड़ेंगी नहीं, मटेरियल लड़ेगा नहीं, बंदे लड़ेंगे। किस बेसिस पे लड़ेंगे? यार मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था, मुझे ये नहीं दिया, मैं वो आज आया है उसको ये दे दिया, तो मैं ज्यादा बुरा लगता हूँ बॉस को, वो ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे प्रमोशन नहीं दी, उसको दे दी है। इस तरह की बातों पे होगा। मोटिवेशन डीमोटिवेशन होगी, अप्रेजल्स होंगे, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इंप्रूवमेंट्स होंगी। तो ये सब चीजें टीम के मैनेजमेंट के लिए होती हैं। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको डिफाइन करना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है, कोई बता सकता है? मेन इन्वेस्टर्स और प्रोडक्ट ओनर्स। नॉर्मली हम बिजनेस में स्टेक होल्डर उन्हीं को कहते हैं जो सबसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम स्टेक होल्डर्स उनको कहते हैं को कहते हैं। किसी भी ऐसे बंदे या पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या कंपनी या सोसाइटी को जो कि किसी तरह से प्रोजेक्ट से या मुतासिर हो सके या मुतासिर कर सके, ठीक है। सो एनीवन हु कैन पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट और गेट इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट इज अ स्टेक होल्डर। सो अब ये बहुत बड़ी डेफिनेशन बन जाती है, इसमें हर बंदा आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ जाएगा, हमसाए भी आ जाएंगे। आपने कोई गांव बना हुआ है, वहां पे उनको निकालना है, खाली करवाना है, और उसकी जगह पे आपने एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, तो वो जो लोग पहले से वहां पे रह रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, ठीक है। आपकी मिनिस्ट्रीज स्टेक होल्डर्स हो जाएंगी। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल्स जो कि प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकें या इम्पैक्ट हो सकें, दे आर स्टेक होल्डर्स। अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब मिसाल के तौर पे किसी स्टेक होल्डर को पता करना है कि यार आज काम कितना हो गया, किसी स्टेक होल्डर को पता करना है यार बंदे कितने छुट्टी पे हैं, तनख्वाह काटनी है उनकी, किसी को पता करना है कि यार पिछले महीने कितना खर्चा हुआ था, इस महीने कितना खर्चा होगा।
सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं वो, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में उनको चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कब कब चाहिए, किसी को डेली चाहिए, किसी को वीकली चाहिए, किसी को मंथली चाहिए, किसी को क्वार्टरली चाहिए, किसी को ईयरली चाहिए, किसी को चाहिए ही नहीं। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स नीड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट फॉर्मेट। कोई कहता है यार बस मुझे वॉइस मैसेज भेज देना काफ़ी है, कोई कहता है मुझे पिक्चर भेज देना, कोई कहता है SMS कर देना, कोई कहता है मुझे जो है ना आपने रिटन रिपोर्ट साइन करके जमा करानी है, स्टैम्प भी हो, ठीक है। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फॉर्मेट, ये सब आ जाता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 टर्म्स यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग सीख जाएं तो अच्छा है। 3 टर्म्स में लिखूंगा यहाँ पे, आप लोगों ने बताना इनमें फ़र्क क्या है। नहीं पता तो मैं समझा दूंगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है प्रोजेक्ट पे इन 3 चीज़ों को करेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कैन यू ट्राई टू डिफरेंशिएट? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क, इशू एंड डिफेक्ट? सर वली मोहम्मद। जी जी प्लीज। रिस्क वो सर जो हम पहले से जज करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ सकता है, क्या ठीक है, प्रॉब्लम्स आ सकते ठीक है। हैं, और इश्यूज वो जो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन हम उसको फाइंड कर सकें। और डिफेक्ट वो होता है जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसमें कोई फॉल्ट आ जाए। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? Risk cannot be eliminated or finished. There should be one possibility for risk will be remain. We can minimize the risk. For defect, it will be minimized. Issue, this will be minimized or removed. चलें मैं पहले इसका आंसर कर दूं। ये पॉसिबल हो सकता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, रिस्क है, ये पॉसिबल है। क्या ख्याल है मुराद? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। पॉसिबल है। पॉसिबल है, तो ये रिस्क हुआ या नहीं हुआ? ये रिस्क हो गया। ये रिस्क हुआ। अगर हम कहें यार छठो गाड़ी, पैदल ही चलने हैं, तो रिस्क एलिमिनेट हो गया कि नहीं? रिस्क एलिमिनेट हो गया। हो गया। नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है कि रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता। रिस्क हो सकता है, हम वो स्ट्रैटेजी चेंज कर लें, वो मेथडोलॉजी चेंज कर लें, सोर्स ऑफ रिस्क को बाईपास कर दें, ठीक है। तो वो जो है ना एक शेर है, जिसको हो जानो दिल अजीज वो उसकी गली में जाए क्यों, ठीक है। तो वो हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं, किसी रिस्क को अल्लाह को जो मंजूर कह के भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो रिस्क होता है, यस, एनीथिंग दैट कैन हैपन इन फ्यूचर, इफ इट हैपन्स देयर कैन बी एन इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। अब इशू वो होता है जो ऑलरेडी हो गया। हमने कहा यार कल हमने आउटडोर कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ एक्टिविटी करनी है, अगर बारिश होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, रिस्क हो जाएगा ये। अब हम कह रहे हैं आज हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, बारिश हो गई है, तो ये इशू कहलाएगा। यहां तक क्लियर है सबको डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड इशू? जी बिल्कुल। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट होता है वो प्रॉब्लम, इशू भी प्रॉब्लम ही है, डिफेक्ट भी प्रॉब्लम भी है, लेकिन फर्क क्या है? इशू वैसी प्रॉब्लम है जो कि प्रोडक्ट बनाने में आ गई। हमने कहा लाइट चली गई जी, पावर फेलियर हो गया, मशीन टूट गई, बंदा रिजाइन करके चला गया, हड़ताल हो गई जी, ये क्या है? इश्यूज हैं। डिफेक्ट्स क्या है? जो डिलीवरेबल्स में आना है, कि आपने ये डिलीवर करना था, इसमें ये चीज तो डाली नहीं, ये डिफेक्ट है। तो दोनों प्रॉब्लम्स हैं। सो द प्रॉब्लम्स इन द प्रोजेक्ट आर इश्यूज, प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट आर डिफेक्ट्स, possible problems in the future that may come and impact the project, they are called as risk. तीनों चीजें क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन? क्लियर क्लियर सर। क्लियर।
So maybe another 10 minutes inshallah I will take, and after that I will wait for your questions. I will answer all your questions inshallah. But if someone wants to leave, no problem. After I finish, right? Okay. So ये होता है risk condition. Now is it possible कि हम let's say हम एक actual training में बैठे हैं, मैं कल हमारा एक सेशन है, is it possible कि कल इतनी बारिश हो जिसकी वजह से लाइट चली जाए और हम ऑनलाइन ही ना आ सकें? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। तो ये रेन का पॉसिबल इवेंट जो है ये कहलाएगा रिस्क। अब मैं अगर कहूं कि इस रिस्क के होने के चांसेस कितने हैं, हाई या मीडियम या लो या वेरी लो या वेरी हाई, क्या सिलेक्ट करेंगे आप? depends upon the weather condition and depends Depends upon the location also, weather condition also. Let's say लाहौर में बैठे हैं तो कम आ रहे हैं, जो कुछ लोग शायद लाहौर के होंगे, मैं लाहौर में हूँ। क्या ख्याल है, कल इतनी तेज बारिश हो सकती है जिसकी वजह से क्लास ही ना हो सके? क्या चांसेस हैं? वेरी हाई और मीडियम और लो और वेरी लो? वेरी लो। वेरी लो। अच्छा, एज्यूम करें हो जाए, इम्पैक्ट कितना होगा? सेम 5 ऑप्शन, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो और वेरी लो, कि यार हमें क्लास कैंसिल करके एक वीक और लगाना पड़ेगा। इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा? वेरी लो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वेरी लो, कुछ लोगों ने हो सकता है ट्रैवल करना हो, मेरी हो सकता है आगे ट्रेनिंग हो, तो मैं सकता है इसको सिलेक्ट करूं हाई इम्पैक्ट। तो पॉइंट ये नहीं है कि हाई है या लो है, पॉइंट ये है कि इस चीज को करने को क्या कहते हैं, इस तरह से क्विकली असेसमेंट करने को क्या कहते हैं। तो अब तक आप लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा, इसको कहते कंट्रोल हैं रिस्क। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया और उसको इमीडिएटली प्रोबेबिलिटी के स्केल पे और इम्पैक्ट के स्केल पे रैंक कर लिया। ये टर्म अभी मैंने एग्जाम का रिजल्ट बताते वक्त भी आपको एक्सप्लेन की थी, क्वालिटेटिव, पास और फेल, अबव टारगेट और ऑन टारगेट और बिलो टारगेट। सो दिस इज नॉट न्यूमेरिकल। आपने जस्ट असेसमेंट कर ली, ओह यार बड़ा नुकसान होगा, या कोई चीज खाई हमने बड़े मजे किया यार आज, तो ये बड़े मजे की या बड़ा नुकसान इसको ये नंबर्स में बता सकते हैं आप? शायद बता पाए अगर यूनिट्स हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। बट इफ वी डू द सेम एक्सरसाइज इन दिस वे कि यार 30% चांसेस हैं कि रेन होगी हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में जिसकी वजह से 10 डेज वेस्ट होंगे और 15,000 रियाल्स का मटेरियल जाया होगा, तो अब हमने क्या किया? नंबर्स में चले गए। तो नंबर्स में चले गए तो हम कह सकते हैं इसको हमने क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया हमने। तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। बड़े ही हैवी वेट टर्म्स हैं, बट नाउ आई एम श्योर कि आपको आइडिया हो गया होगा कि यार एमी लोग इंप्रेस करने के लिए में बोलते हैं, एक्चुअली होता है क्या है। यही पर्पस है सर्टिफिकेशन का या ट्रेनिंग का, आपको कॉन्फिडेंटली 10 बंदों की मीटिंग है, 50 की मीटिंग है, आप कॉन्फिडेंटली टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर सकें, अपना इनपुट दे सकें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं मीटिंग में, 10 मिनट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और 10 मिनट बाद मीटिंग उनके हाथ में होती है, हाईजैक कर लेते हैं मीटिंग। ठीक है, वजह यही होता है कि अच्छी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्फिडेंस होता है। कई लोग बेचारे इसी डर में रहते हैं, यार मैं कोई गलत वर्ड ही ना बोल दें। बोलो ही ना, चुप ही रहो, ना बोलेंगे ना गलती होगी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये सेफ अप्रोच तो है, लेकिन ये आपको बहुत ऊपर नहीं लेके जाएगी। तो दिस इज द बेनिफिट दैट यू कैन कॉन्फिडेंटली यूज टर्मिनोलॉजी इंटरनेशनली, लोकली, इन एनी मीटिंग। प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज, आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उनको रैंक भी कर लिया। अब आपने देखा होगा आपकी कंपनीज में काफी जगहों पे स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर्स क्या है? रिस्क रिस्पॉन्स है। फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, इंश्योरेंस ले ली, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिस्पेंसरी बनी हुई है, फर्स्ट एड का बॉक्स रखा हुआ है, ये क्या है? सारे ये रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं सारे। तो दिस इज व्हाट वी डू इन रिस्क मैनेजमेंट। देन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या होती है? जब हम कस्टमर हैं, हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए किसी और कंपनी की नीड है। वो नीड किस तरह की हो सकती है? हमें रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए, कुछ चीज़ें किराए पे आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हम खरीदेंगे।
या कहीं पे हमने स्कोप ही उठा के किसी और को दे दिया, जिसको क्या कहते हैं हम, आउटसोर्सिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो हमने अपने हिस्से का काम उठा के किसी और को दे दिया, उसे कहा यार ये करके हमें दे दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग करते क्यों है? कभी इसलिए करते हैं हमें आती नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज ही नहीं है। कभी इसलिए करते हैं एक्सपर्टीज तो है, हमारे पास टाइम नहीं है। कभी इसलिए करते हैं एक्सपर्टीज भी है, टाइम भी है, लेकिन हमने किया तो महंगा पड़ेगा, कोई और कंपनी करेगी तो सस्ता पड़ेगा। एक बड़ी इजी एग्जांपल है, अभी किसी ने पूछा था स्टार्ट में कि एक बुक कौन सी पढ़ें हम। ठीक है, मैंने कहा यार ये फलानी बुक पढ़ लो पीएमपी के एग्जाम के लिए। वो बुक जो है वो समझे 600 पेजेस की बुक है। अब आपने 600 पेजेस की बुक जो है वो प्रिंट आउट करनी है अगर, तो क्या ख्याल है 600 पेजेस की बुक प्रिंट करने के लिए आप अपना पर्सनल प्रिंटर यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा जो घर में पड़ा हुआ आपके पास, या आप किसी स्टेशनरी बुक शॉप पे चले जाएं उनसे कह दें वो प्रिंट कर दें? सस्ता क्या पड़ेगा? स्टेशनरी बुक शॉप वाला सर। उसकी क्या स्टेशनरी उसकी क्या वजह, वो तो आपसे प्रॉफिट भी लेगा। पर्सनल सही रहेगा सर। इसलिए कि वन टाइम यूज है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी अगर अपना प्रिंटर लगेगा। नहीं, एज्यूम करें आपके पास ऑलरेडी प्रिंटर भी पड़ा हुआ है, फिर तो खुद से करेंगे, फिर कॉस्ट कम आएगी। नहीं फिर भी ज्यादा आएगी। उसकी वजह ये है कि आपका प्रिंटर है सस्ता। ठीक है, आपका प्रिंटर होगा शायद 10,000 का, 6,000 का, पाक रुपीज में। रियाल्स में करें शायद 200 रियाल का भी नहीं होगा। ठीक है, 100 रियाल का होगा शायद। जो बुक शॉप पे पड़ा हुआ प्रिंटर दैट विल बी मे बी 10,000, वो होगा शायद 1 लाख का, 5 लाख का होगा। ठीक है, या 10,000 रियाल्स का होगा या डॉलर्स का होगा। वहां पे 500 पेजेस की बुक प्रिंट करने में 15 मिनट लगने हैं। आप करने बैठेंगे आपको एक दिहाड़ी लग जाएगी पूरी। नंबर एक, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। नंबर दो, कॉस्ट बड़ी ज्यादा आ जाएगी। आपने तो अपने से प्रॉफिट भी नहीं ले रहे, फिर भी ज्यादा आएगी। ठीक है, क्यों? उसका हैवी ड्यूटी है, उसकी कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोडक्शन बहुत कम है, वो स्पेशलाइज्ड है इस चीज में। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल वेज ढूंढ लिए हैं उस काम को करने के लिए। इसीलिए बिजनेस की दुनिया चलती है आउटसोर्सिंग के ऊपर। किसी को कोई शौक नहीं है किसी और का पेट भरे बिजनेस में। ठीक है, इंडिविजुअली ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट, बट बिजनेस में किसी को कोई शौक नहीं है कि यार मैं अपना पेट काट के एक और कंपनी को पालूं। नहीं, सब अपने मतलब को करते हैं। आउटसोर्सिंग इसलिए करते हैं कि एट द एंड कस्टमर को फायदा होता है। ठीक है, वरना हर कंपनी खुद ही करना शुरू कर दे सब काम। तो ये रीजंस होती हैं आउटसोर्सिंग करने की। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स टू वाइंड अप एंड देन आई विल जस्ट आंसर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। तो स्टेक होल्डर मैंने ऑलरेडी बताया, एनीवन हु कैन पॉजिटिवली नेगेटिवली इंपैक्ट योर प्रोजेक्ट और गेट इंपैक्टेड बाय दैट प्रोजेक्ट। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होती है, सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे से। आप एक चीज चेंज करेंगे दूसरी छिड़ जाएगी, दूसरी चेंज करेंगे तीसरी छिड़ जाएगी। आपने कहा स्कोप बढ़ा दो, टाइम वही रखो, कॉस्ट वही रखो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइम भी हिलेगा, कॉस्ट भी हिलेगी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। प्लान, 5 प्रोसेस ग्रुप्स का जिक्र किया था मैंने शुरू में, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। प्लान हमारा अगर तगड़ा होगा तो एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगी, कंट्रोलिंग आसान हो जाएगी। प्लान अगर वीक होगा तो मसले रहेंगे। प्लान बनाने के बाद हम उसको बेस लाइन कर लेते हैं, यानी अप्रूवल ले लेते हैं। अब प्लान कर लिया, बेस लाइन कर लिया, अप्रूवल कर लिया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो क्या करना है, देखना शुरू कर देना, कंट्रोल करना शुरू कर देना कि क्या हम प्लान के मुताबिक जा रहे हैं या नहीं। अगर प्लान के मुताबिक जा रहे हैं तो वंडरफुल, अगर नहीं जा रहे तो फाइंड आउट करें कि कितना डिफरेंस है। उस डिफरेंस को कहते हैं वेरिएंस, डेविएशन। अगर तो वेरिएंस छोटी है, आपने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इतना तो हो ही जाता है। अगर वेरिएंस एक खास लिमिट से ज्यादा है, उस लिमिट को कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यूज। वेरिएंस अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिकवरी प्लानिंग। तो ये साइकिल चलता रहता है। जब हमारे डिलीवरेबल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम चले जाते हैं क्लोजिंग में। प्लान के मुतालिक आखिरी एक बात, प्लान लोग समझते हैं सिर्फ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज को कहते हैं, प्राइमवेरा या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की फाइल को। बड़े प्रोजेक्ट पे आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज प्रोजेक्ट्स, राइट। तो प्लान के
बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये 18 कंपोनेंट्स होते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फुल कोर्स में। इसी में कम्युनिकेशन प्लानिंग, रिस्क प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, स्कोप प्लानिंग, requirement planning, everything is included in that. Once again, this is going to be the course, inshallah, full course, inshallah. It will start from December, 1st of December, Thursday, Friday, Saturday, for 3 weeks, inshallah. The timing according to Pakistan, this is the timing. KSA timing is this one. Now, if anyone wants to leave, no problem. Have a nice time, inshallah. You can stay in touch with me about the pricing or the registration. You know my number. That is my Saudi number, and my Pakistani number is 033207328482. But please do not call me. Only WhatsApp. Right, so only available on WhatsApp. On WhatsApp आप बेशक मुझे वॉइस मैसेज भेजें या टेक्स्ट मैसेज भेजें, लेकिन कॉल्स में अटेंड नहीं करता। मोस्टली मैं मीटिंग्स में होता हूँ या ट्रेनिंग्स में होता हूँ या सो रहा होता हूँ या मैच देख रहा होता हूँ, तो इसीलिए मैं कॉल्स अटेंड करना मुझे पसंद नहीं है। तो आपने जब भी रब्ता करना हो मुझे आप उस पर मैसेज कर दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ इफ एनीवन वांट्स टू लीव, नो प्रॉब्लम। एनीवन वांट्स टू स्टे एंड आस्क क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आई एम अवेलेबल। यस प्लीज। इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, अपलोड करके शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। जी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सर? जी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत लेट शुरू किया और सर बिगिनिंग तो मिस कर गया, तो फिजिकल बिल्कुल ट्रेनिंग हो पॉसिबल गया। होगी? जी 1 बाय 1। जावेद आप कुछ कह रहे थे, ठीक है, आप मिस करके मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आपका कोई और पॉइंट जावेद? नहीं, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया सर। ओके जी। वावे भाई आप क्या कह रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग का? मैं कह रहा हूँ सर फिजिकल ट्रेनिंग पॉसिबल होगी, क्योंकि इंटरनेट की बहुत इंटरप्शंस हो रही हैं यहाँ पे। आप अगर तो लाहौर में हैं, अगर आप जी लाहौर में हैं और आप एक ग्रुप बना सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू कंडक्ट फिजिकल क्लासेस। ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का 5-10 लोगों का ग्रुप बनता है, मैं लाहौर में आपको फिजिकल ट्रेनिंग करवा दूंगा। आई पर्सनली enjoy मोर इन फिजिकल, बट ड्यू टू लिमिटेशंस वी हैव शिफ्टेड टू जूम। ठीक है, मैं लाहौर में हूँ, मैं इस्लामाबाद तक ट्रैवल कर सकता हूँ। लाहौर या इस्लामाबाद में अगर आप लोग इस्लामाबाद, ग्रुप सर मैं बना सकते हैं, इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई अरेंज करता हूँ अगर हमारे पास ग्रुप बन रहा है। आप ग्रुप बनाइए, इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद आके ट्रेनिंग करवा दूंगा। ओके सर, ठीक ओके, है, थैंक यू आप वेरी मेरे मच से सर। राब्ते में रहिएगा। आप बल्कि यूं भी कर सकते, एक तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आपने जिससे भी बात करनी होगा आप उनके साथ कर लीजिए, उनको रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। अगर आपके ज्यादा लोग हों, मैं इसी तरह से एक सेमिनार मेरा नेक्स्ट भी आ रहा होगा, उसमें उनको ले आइएगा। तो आप ग्रुप जी बना लें, बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह फिजिकल करा दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, माय थैंक यू वेरी मच। वेलकम, यू आर वेलकम। तो मेरा एक क्वेश्चन है, नवंबर में आपका कोई सेशन है या दिसंबर में ही है जो आप डेट्स नहीं, देते हैं? नवंबर में मेरा प्राइमवेरा का है। क्योंकि मुझे मार्केटिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो एटलीस्ट 2 महीने का गैप रखता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये दिसंबर बैच के लिए मैंने मार्केटिंग स्टार्ट ही नहीं की, अभी तक फ्लायर ही नहीं बनाया मैंने उसका। ठीक है, सिर्फ ये स्लाइड अभी तक बनाई है, तो अभी तक मैंने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की। एटलीस्ट मुझे कुछ हफ्ते चाहिए होते हैं मार्केटिंग के लिए। तो डेट्स एक और इंशाल्लाह दिसंबर ही है, अनलेस एंड अनटिल कि अगेन जूम के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं नवंबर में, एक ग्रुप बना लें 10 लोगों का कम अज कम, मैं उसमें आपको कर दूंगा, नवंबर में डेट्स दे दूंगा मैं। ठीक है, और एक चीज ये थी कि पीएमपी में भी रिस्क मैनेजमेंट में भी है पीएमआई, वो इसी से वो आप उसमें कर सकते हैं अगर मतलब थोड़ा चेंज नहीं समझ नहीं आई मुझे आपकी। जैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक सेपरेट है ना, 2 किस्म के एग्जाम है, एक तो नॉर्मल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और एक रिस्क मैनेजमेंट का भी जी है। वो मैंने शुरू में अर्ज किया था अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने पीएमपी और आरएमपी, उसको आरएमपी कहते हैं। ठीक है, वो सर्टिफिकेशन भी की हुई है और वो मेरा कोर्स अवेलेबल भी है। अगर आप कम लोग हैं आरएमपी के, रिकॉर्डेड वाला मेरा रजिस्टर कर लें, मेरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है। आरएमपी का वो आप कर लें। अगर आपके 10 लोग हैं तो मैं आपको लाइव करवा दूंगा। चलो ठीक ठीक। आपका सऊदी अरब आने का कोई प्लान है? मैंने सुना था कि आप काफी यहाँ पे कंडक्ट करते रहे हैं ट्रेनिंग्स। जी मैंने तकरीबन 12 साल बहुत ज़्यादा कंडक्ट की है। तो जब यानी इतनी ज़्यादा कंडक्ट किया कि सऊदी वाले जो है ना वो मुझे अपना समझते हैं, यहाँ पे अपने इलाके में मैं गैर हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे तो मैंने जैसे अर्ज किया तो तकरीबन मेरे, अब तो मैंने बहुत सालों से ना काउंट बढ़ाना ही छोड़ दिया हुआ है मेरा। आप देखेंगे मेरी प्रेजेंटेशन में कई सालों से 12,000 ही लिखा हुआ है मैंने।
ठीक है, मैंने वो बढ़ाना ही छोड़ दिया। 200 PMP वर्कशॉप्स एंड 12,000 स्टूडेंट्स, ये 3-4 साल से मैंने इसको अपडेट करना ही छोड़ दिया। मेरा ख्याल है अराउंड 14-15,000 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ सऊदी अरेबिया में, और अराउंड 220-230 वर्कशॉप्स हैं सिर्फ सऊदी अरेबिया में। बट अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ वापस पाकिस्तान, तो सिर्फ जूम पे कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कोविड की वजह से जूम पे ही हो रही थी। ठीक है, तो अब जब जूम आ गया ना कोविड की वजह से, तो लोगों का चाका खुल गया जूम का। अब आप यकीन करें, इस वक्त माशाल्लाह अभी अभी 26 लोग हैं, लेकिन इससे पहले 52-35 तक भी गए हैं अभी। ठीक है, आप हैरान होंगे कि मैंने अभी सैटरडे को फिजिकल सेमिनार किया है लाहौर में। ठीक है, तीन लोग आए थे। ठीक है, 3 में से 2 मेरे पुराने स्टूडेंट से सिर्फ सलाम करने आए थे, एक ने आया था। ठीक है, सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। तो वो जो है ना, अब लोगों का जो है ना शायद बर्डन लगता है ट्रैवल करना। ठीक है, ट्रैवल करना। वो कहते हैं जब जूम पे हर चीज है तो ठीक है, तो हमें हमें भी अच्छा है, हमें तो मुझे तो बल्कि एक्सपेंडिचर्स होते हैं एक्स्ट्रा। मेरा अपना टाइम, ड्राइविंग टाइम, आना जाना, तैयारी का टाइम। ठीक है, यहाँ पे तो जूम पे आपने नीचे ट्राउजर पहना, ऊपर कोट पहना, बैठ गए 2 मिनट में तैयार हो गए। और कोविड ने ठीक उसको है, मजीद पुख्ता कर दिया इस वर्किंग को। वहां पे खाना पीना, चाय शाय अलग चीज है। ठीक है ना, अभी जैसे भाई ने कहा था जुबेल में किया, तो जुबेल में तो हमारा बड़ा जबरदस्त मेन्यू होता था। ठीक है, जी चॉकलेट्स मेरे ख्याल में होती आप थी। जुबैल और मतलब दमाम और रियाद साइड पे शायद ज्यादा रहे जी हैं। जी जी, तो हाँ, जद्दा में नहीं बस आना होगा आपको। जद्दा में भी मेरा होता था, साल में एक दो हो जाते थे, लेकिन जद्दा में इतना रिस्पांस नहीं आता। जद्दा में था, यम्बो में था, मदीना में करवाया, मक्का में करवाया, अबहा में करवाया, कसीम में करवाया, तो सभी जगहों पे करवाता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन है, ये जो कहा जा रहा है कि 2021 के बाद रीस्ट्रक्चर हो चुका है पीएमपी कोर्सेज, तो क्या आप बेसिकली क्या चेंज आया है मतलब इसमें? यार इन वैसे शॉर्ट आंसर इसका ये है कि पहले से आसान हो गया। ठीक है, आसान हो। हाँ, उसकी रीजन क्या है कि उससे पहले तक ना, अगर 5 लोग देते थे, 10 देते थे ना, एक आधा फेल हो जाता था। ठीक है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 10 में से एक आधा फेल हो जाता था। अभी पिछले 1.5 साल से मेरा ख्याल है 100 के करीब तो कम अज कम ये वो लोग हैं जो राब्ता करते हैं। कई लोग तो राब्ता ही नहीं करते ना, जरूरत पड़ने पे करते हैं, सर मैंने फलां साल पहले पास कर लिया था, तो अब आपकी ये जरूरत है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग तो राब्ता ही नहीं करते। कई लोग जो राब्ता करते हैं, तो एटलीस्ट 100 लोगों ने शेयर की होगी गुड न्यूज़ के अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। हार्डली एक आधे ने पिछले 1.5 साल में फेलियर की शेयर किया। ठीक है, तो उससे फीलिंग आती है कि आसान हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो मेजर चेंज आई है, उससे पहले सिर्फ वाटरफॉल के क्वेश्चंस आते थे। वाटरफॉल क्या होता है? प्रिडिक्टिव अप्रोच को कहते हैं। पहले प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, टेस्ट किया, डिलीवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज वाटरफॉल, प्रिडिक्टिव अप्रोच। अब उन्होंने डाल दिया अंदर एजाइल। एजाइल को कहते हैं एडॉप्टिव, चेंज ड्रिवन। अब एग्जाम का मेजर जो चेंज है ना, वो ये है कि 50% क्वेश्चन वाटरफॉल से आने हैं, 50% एजाइल से आने हैं। और ये परसेंटेज उसके साथ है वो जो मैंने आपको शुरू में कहा था, पीपल, प्रोसेस और बिजनेस की। पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस। पीपल प्रोसेस में मैंने कहा 50% आने हैं, पीपल में 42% आने हैं, बिजनेस में 8% आने हैं, प्रिडिक्टिव में से 50% आने हैं, एजाइल में से 50% आने हैं, तो बन गया 200%। तो ऐसा नहीं है, एक ही क्वेश्चन आपका प्रोसेस में हो सकता है और वो हो सकता है प्रिडिक्टिव में भी हो। एक ही क्वेश्चन आपका बिजनेस में से भी है और एजाइल में से भी है एट द सेम टाइम। तो ये परसेंटेज चेंज है जनवरी 2021 के बाद। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? Sir, I was just waiting for this cost performance index. थोड़ा मुझे वो अच्छा, मैं आता हूँ। उससे पहले अगर किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो मैं पहले वो आंसर कर दूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? सीपीआई की क्या कंफ्यूजन है? ये सीपीआई का अभी रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, अभी 0.95 इज द सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वी आर सेइंग दैट वी आर ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग
वो क्लॉज या वो क्वेश्चन के हिसाब से वी आर सेइंग दैट वी क्वेश्चन आर को छोड़ दें, ओवरस्पेंडिंग। क्वेश्चन को छोड़ दें, सिर्फ 0.95 याद रखें। ठीक है, 0.95 या हमने कहा 0.95 ओवर स्पेंडिंग है, क्यों है? ठीक क्यों है, है या ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 0.95 का मतलब ये है कि हमने स्पेंडिंग जो की वो तो की $100 इन द एग्जीक्यूशन। वो $100 करके जो अचीवमेंट थी उसकी वर्थ जो थी ना वो $95 थी। ओके समझ आई बात? ओके कि हम बाजार में गए, $100 का पेमेंट की, जो भी चीज लेके आए, हमने जब आके प्लान में चेक किया तो पता चला ओहो यार, प्लान में तो इसके अगेंस्ट हमने $95 रखे थे, खर्च हम $100 आए हैं। सर मैं अपना समझने के तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं। जी जी प्लीज प्लीज। हम बात करते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की। इसमें जो मेन बात है वो है परफॉर्मेंस। अगर हमारी परफॉर्मेंस 0.95 है तो इसका मतलब है हम कुछ लूज कर रहे हैं। ठीक है ना? जी जी। तो अगर आपकी कॉस्ट परफॉर्मेंस 0.95 है तो इसका मतलब ये है कि आप 0.5 लूज कर रहे हैं, ओवर स्पेंड कर रहे हैं। नहीं, 0.95 लूज नहीं कर रहे। सॉरी, आपने क्या नंबर बोला? मैंने कहा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस 0.95 है हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप 0.5 लूज कर रहे हैं या ओवर 0.05। स्पेंडिंग कर हाँ, 0.05, बिल्कुल ठीक है, 0.05। बिल्कुल ठीक है, जी जी। बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको हम बात ये कर रहे हैं कहेंगे। परफॉर्मेंस हाँ, की, और परफॉर्मेंस है हमारी 0.95। तो हम कहेंगे $100 जो हम खर्चते हैं ना, $95 एक्चुअली कार आमद है, $5 वेस्टेज हो रही है। अब सेम रेशो आप चाहे $100,000 वाले प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर दें तब भी उसका मतलब यही रहेगा, चाहे प्रोजेक्ट का बजट $1 बिलियन है तब भी वही रहेगा। ओके ओके okay, it is reference to the full complete this one cost of the project up till day, up till today। okay okay so अब spending तक के मुताबिक हमने जितना काम किया उस पे जितना खर्चा किया वो था $100। एज पर प्लान उस पे जितना खर्चा होना चाहिए था वो था $95। तो वेस्टेज कितनी हो रही है? $5 या 5%। अच्छी बात सर। क्लियर हो ओके गया? ओके यस 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 थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच माय प्ले, सर। वेलकम। ये अभी आपके क्लासेस वो अटेंड करने के बाद में हमें 35 पीडीओस मिलेंगे सर वो? जी जी, वो जब लास्ट डे होगा इंशाल्लाह, तो लास्ट डे के नेक्स्ट डे इंशाल्लाह, तो 17 दिसंबर, so like 18 दिसंबर you will get your certificate soft copy inshallah। Okay, so now this one is 1 2 3, this is 1 2 3 is each class is 3 days? No, this session is of 9 days। Okay okay, ये 9 के 9 लेक्चर्स में हम वो 10 नॉलेज एरियाज पढ़ेंगे जो भी मैंने जिक्र किया। जी जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आप चाहे ये पढ़ लें चाहे ये पढ़ लें, नहीं, आपने 9 की 9 क्लासेस ही पढ़नी है तब कोर्स कंप्लीट होगा। So then we will get the 35 PDU, then we can register for PNP, then we can give the exam, right sir? इंशाल्लाह यस एग्जैक्टली। Okay सर, ये कोर्स का क्या फीस है सर? कोर्स की फी मेरी यूजुअली जो पास्ट जो मेरा बैच था उसी की मोस्ट लाइकली मैं कंटिन्यू करूंगा। वो मैं अभी आपको मैं लिख देता हूँ कि क्या थी। देखिए, मैं मेरी एडवर्टीजमेंट्स में आपको फी नज़र आएगी 1200 रियाल्स की। ठीक है, उसमें मैं 2 डिस्काउंट्स देता होता हूँ। ठीक है, एक होती है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ठीक है,
बल्कि 3 डिस्काउंट्स में देता होता हूँ। एक होती है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, एक होती है ग्रुप डिस्काउंट, एक होती है इफ यू पे इन पाकिस्तान। ठीक है, ये नॉर्मली मेरा स्ट्रक्चर होता है। आप तीनों भी अवेल कर सकते हैं। इस डिस्काउंट की वजह ये होती है कि अगर मैं आप मुझे सऊदी अकाउंट में भी है मेरे पास, आप उसमें भी पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वैट भी पड़ता है मुझे और कफील को भी भत्ता देना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप मुझे डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे कर देंगे तो वो मेरे लिए भी बचत है, आप लोगों के लिए भी बचत है। ठीक है, तो ये मैं 3 डिस्काउंट्स आमतौर पे देता हूँ। तो अगर आपका ग्रुप हो तो वो अराउंड आपको 550 का पड़ेगा, मे बी इफ आई एम नॉट डूइंग एनी स्मॉल कैलकुलेशन एरर, तो 550 रियाल्स का ग्रुप आपको पड़ेगा अगर आप एज अ ग्रुप रजिस्टर करते हैं, अर्ली बर्ड भी करते हैं, ग्रुप भी करते हैं, पाकिस्तान में भी पे करते हैं। तो वैसे मेरी स्टैंडर्ड रेगुलर जो अनाउंस्ड होती है वो 1200 होती है। और मैं अर्ली बर्ड जाऊंगा तो 25% जाएगा ना सर? हाँ, आप अकेले आते हैं, सऊदीया में पे करते हैं, 900 पे करेंगे आप। ओके, अगर सऊदीया में नहीं, मैं अगर आपको इसमें पाकिस्तान में पे कर रहा हूँ तो आपको ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, आपका तकरीबन पड़ेगी 720 पड़ेगी वो। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक। मेरी तकरीबन मोर और लेस ये रहती है, अनलेस एंड अनटिल। अच्छा, इसके अंदर एक चीज होती है, क्योंकि बाद में कुछ लोग शिकायत करते हैं, पिछले बैच में ऐसा हुआ, एक बंदे ने इस तरह से पे किया, उसके बाद एक और बंदा आया, उसने जो है वो शायद कोई जॉबलेस था या कुछ ऐसा था, उसने थोड़े कम पे किए, तो बाद में लोग कहते हैं जो आपने उससे इतना लिया, उससे इतना लिया। तो जो जॉबलेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर होता है मेरा। अब वो झूठ बोल के ले लें, ये अब उनकी मर्जी है, लेकिन अगर कोई मैं कहता जी मैं जॉबलेस हूँ, तो उसको मैं फिर मजीद डिस्काउंट दे देता हूँ। अच्छी बात, अच्छा, थैंक यू सर, माय थैंक यू, थैंक वेलकम, यू या वेरी मच। वेलकम, या सर वेलकम। ये वीडियो हमको मिलेगी ना ये ग्रुप में? जी जी, इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मे वेलकम। बी सम ऑफ द एरियाज वाज वेरी क्लियर एंड काफी अच्छा था। इट इज रियली अल्हम्दुलिल्लाह, बिग थैंक्स टू यू। माय वेलकम, वेलकम, थैंक यू वेलकम। सर। ये जुबेल आने का कोई प्लान नहीं है ऑन मतलब? नहीं, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, मेरा एक काम एक्सपायर हो चुका है, और तो इसीलिए मैं एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो वापस नहीं आ सकूंगा। वो कहते हैं हलाला किए बगैर तो हलाला किए बगैर वापस नहीं आ सकूं जब तक 3 साल नहीं गुजारते, इद्दत पूरी नहीं होती और वगैरह वगैरह। अच्छा सर, एक सवाल था जी, मेरा। ये जो प्रैक्टिस एग्जाम थैंक यू होते सर। हैं, तो ये ये भी वेलकम। पार्ट होते हैं आपकी ट्रेनिंग का? जी, मैं उसको शेयर करता हूँ जो भी मेरे पास बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन चूंकि लोग सारे इकट्ठे नहीं देते, तो इसीलिए हो सकता है कई लोग अभी दे, नियर फ्यूचर में उनके लिए वो काम का हो। कई लोग 2 साल बाद मुझसे रब्ता करें, या 2 साल बाद अगर उसी कोर्स मटेरियल उन्हीं क्वेश्चंस को रेफर करें, तो शायद उस वक्त उतने यूजफुल ना हो। तो इसीलिए वो बेहतर ये है कि इस वक्त तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन क्या वो आफ्टर 6 मंथ्स भी उतने ही यूज़फुल होंगे, नहीं होंगे प्रैक्टिस एग्जाम्स, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि फ्यूचर में जब भी आपने एग्जाम देना है, उस वक्त एक दफ़ा दोबारा मुझे पूछ लें, मेरे पास जो तो भी सर, ये लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस मैं शेयर कर एग्जाम की दूंगा। सोर्सेस क्या होती हैं? मतलब कहाँ से आते हैं ये प्रैक्टिस एग्जाम? पीएमआई इनको लॉन्च वो करता है, रिलीज करता है, या जो नहीं, ट्रेनर्स हैं वो? नहीं, पीएमआई कभी भी नहीं करता। सही। ठीक है, ट्रेनर्स को भी क्वेश्चंस का नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आने हैं। ठीक है, सही। होता ये है कि किसी बेसिस पे फीडबैक लेके इंडिपेंडेंट कमर्शियल बॉडीज होती हैं जो कि ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हैं, या फीडबैक ले लिया, जिन्होंने भी एग्जाम दिया उनसे फीडबैक ले लिया। ठीक है, किसी ने ये स्टोरी सुना दी, किसी ने उससे मिलते जुलते 100 क्वेश्चंस बना दिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जैक्टली सेम स्टोरी एक्चुअल एग्जाम में नजर आ जाए। तो अब ये लेकिन अच्छा पीएमपी। सैंडबॉक्स होता है प्रैक्टिस जी के जी। लिए, कि अगर आप रफली एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं, 85 to 90, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इजीली इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लेंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
सही सही। जी, any other question from anyone? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके My pleasure, आने welcome. का। और मेरा क्वेश्चन है जी जी प्लीज। कि आपने फीस सऊदी रियाल में बताई है, पाक रुपीज में कितनी है? पाक रुपीज में कितनी है? पाक रुपीज में यार इसको 59 या 58 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो वो रफली अगर आप सारे डिस्काउंट मिला लें, 57.85 चल रहा है सर आज। हाँ जो भी चल रहा है उसके आसपास आप कर लें। वो काम ज्यादा आप देख कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले दिनों में अभी शहबाज शरीफ साहब गए तो हैं सऊदी अरब, तो देखें कितने डॉलर्स लेके आते हैं। हो सकते इतने डॉलर ले आए कि वो रियाल जो है 30 रुपए का हो जाए। ठीक है ना, तो कुछ कह नहीं सकते इस नहीं बारे में। होगा। अच्छा, आपने कहा कि आप 3 साल से पहले नहीं आ सकते, अगर आपको वही कफील अप्रोच करे तो आप आ सकते हैं। उस कफील को दिल नहीं करता, उसने इतना तंग किया कि उससे दोबारा नहीं राब्ता बात है, करें। अल्लाह पाक कहानी घर है। घर की। ठीक है ठीक है। हाँ, तो रफली पाकिस्तानी रुपीस में वो तकरीबन 25 to 30,000 बन जाएगा आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स। जी, एनीवन एल्स प्लीज, एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर हम खत्म करते हैं सेशन जो है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी या सऊदी पे इंशाल्लाह वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो सी यू इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम।